Good afternoon, everyone. Good afternoon, ma'am. I think we should start on time. Ravi, हम शुरू करें? Yes, ma'am. अच्छा. Good afternoon to all. On behalf of the Dean Student Welfare and Institute of Lifelong Learning, ILLL, I, Dr. Poonam, ILLL Fellow and Coordinator of this session, welcome you all to the third day and fifth online session of this online orientation cum guidance program for Common University Entrance Test CUET 2022. This program is meant to guide students who wish to join undergraduate courses at University of Delhi. का पेपर कहाँ से आ गया? सेट का तो है नहीं उसमें। ये हाँ 24 क्रेडिट, हाँ 28 क्रेडिट। सर का म्यूट करवा दीजिए एक बार। Sir, may I request you to please mute yourself? तो फिर कॉन्फिडेंशियल तो बन ही नहीं सकता। ठीक है। Sorry for the inconvenience. Sir, can I request you to please mute yourself? So the objective of this program is to provide general and domain-specific academic guidance to the candidates appearing for CUET through interactive online sessions and its outreach to the larger students community through live telecast. This program will help the candidates to be familiar with the pattern of CUET and get an idea and opportunity to interact with subject experts. The initiative of this program has come from our Honorable Vice Chancellor, Professor Yogesh Singh. So at the very outset, we will listen to his message. Now I request Mr. Ravi to kindly play the video. दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से इस काउंसलिंग सेशन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा डीन स्टूडेंट वेलफेयर और IIL इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग, जिन दोनों ने मिलकर ये तय किया कि ये एक ओरिएंटेशन और काउंसलिंग सेशन का आयोजन किया जाए। मन में ये था क्योंकि ये जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है ये पहली बार हो रहा है। इसमें किस तरह का एग्जाम आएगा, किस तरह के क्वेश्चंस होंगे, ऑब्जेक्टिव है तो कहां पर फोकस करना है, ऐसे बहुत सारे प्रश्न बच्चों के मन में स्वाभाविक रूप से होंगे। तो उन लोगों ने दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से सोचा कि एक इस तरह का सेशन आयोजित किया जाए और विशेषकर इसमें फोकस उन बच्चों का रखा जाए जो कि SC/ST कैटेगरी से आते हैं। कई सालों का ऐसा अनुभव भी आया कि कई बार SC/ST की सीट्स खाली भी रह जाती है। कोई भी सीट खाली रहे किसी भी विश्वविद्यालय के लिए चिंता की बात है, और अगर SC/ST की सीट खाली रहती है तो और भी चिंता का कारण है। इस सबको ध्यान में रखते हुए और पहली बार हमने ये स्टेप जो लिया है और ये विद्यार्थियों के हित में है, हम सबको ठीक से गाइडेंस देनी चाहिए, ठीक से फिर पढ़ना चाहिए ताकि अच्छे कॉलेज में एक आपकी इच्छा के अनुसार कोर्स में एडमिशन हो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है, नए नए उसमें आयाम जुड़ रहे हैं और जो टेस्ट के माध्यम से आएंगे सारे देश के बच्चे अपने अपने हिसाब से तैयारी करके आएंगे, तो हमको बहुत सिंसियरली इसको पढ़ना भी चाहिए। मैं आज उस बात पे नहीं कह रहा कि जो पहले हमारी पद्धति थी CUET से पहले की, उसमें कुछ खामियां थी या नहीं थी, लेकिन आज जब देश ने तय किया है कि CUET से होगा, हम सबको उसके हिसाब से अपने को ढालना है। और ये जो काउंसलिंग और ओरिएंटेशन प्रोग्राम है उस ढालने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। मैं आप सबको बहुत सारी बधाई देता हूं, ढेर सारी शुभकामनाएं। आप दिल्ली विश्वविद्यालय में अच्छा स्कोर लेकर एडमिशन लीजिए। दिल्ली विश्वविद्यालय में आपका स्वागत है।
Thank you for listening. Now we come to today's session. Today's session is divided into three sections: physics, chemistry, and performing arts. We will be following the guidelines of NTA and admission bulletin of the University of Delhi. We will discuss the structure of the question paper and the nature of questions that may be expected. All the questions and queries will be entertained at the end of the session. So we request the students to please type your questions in the chat box, assigning the name of the subject expert. Now I welcome our first speaker and subject expert, Professor Ajay Arora from physics. Before we begin the first part of the session on physics, I would like to present a brief introduction of Sir. Presently, Sir is OSD examination since December 2020. He is a professor of physics at Keshav Mahavidyalaya. Sir also worked as the principal Deshbandhu from 2012 to 18 and the principal Keshav Mahavidyalaya from 2008 to 2009. He was postdoctoral fellow at Queen University, Canada from 1990 to 91. He visited University College London as visiting scientist in 2015 and Open University Milton Keynes, England in 2008. Sir is an eminent scholar and we are lucky to have him with us today. Welcome, sir. Over to you now. Thank you, Poonam, for giving me the opportunity to interact with the students. My philosophy of interacting with the student is nobody knows what is going to be in the question paper. If I, try to prepare myself, it's like a battle. You are not aware what kind of enemy you are going to face. So similarly, what kind of question you are going to face, you cannot predict. Only thing is, you can only prepare yourself for understanding the subject. This is true for any and every subject. चाहे वो mathematics हो, चाहे वो physics हो, या कोई social science. So the first thing is, my suggestion to my dear student would be that your focus should be what has already been taught to you in your NCERT. The difference between NCERT and any competition is in an when you conduct the exam by any education board like CBSE, there is a set pattern. You are asked to write, and whenever you are writing in mathematics or in physics, or even in chemistry, you try to write and prove some known result, known theorems. Whereas in the case of the competition exam, you are expected to go for the application of those. So I can look for the application provided I know the basis of that particular topic. So it will be very difficult for me to interact and give you something as a capsule. कि आप ये capsule खा लीजिए and you will be good enough for attempting your physics part up to the tune of 80% or 90%. There is no medicine like that. But let me take a simple example of a particular subject so you would understand what is the idea of conducting any competition exam. How to distinguish between student A and student B. If somebody asks you to prove Pythagoras theorem, there is a standard method, everybody is going to prove the same way. But if somebody is going to ask you the application of Pythagoras theorem, everybody would have a different way to implement that theorem. So understanding the concept and then applying on a different situation is what is expected out of you in any of the competition exam. The competition exam, it will not be that you prove A plus B whole square is A square plus B square plus 2AB. You are expected that you use these kind of a result and to implement it. And the another factor which is most important is the time scale. You have a limited time to attempt all those questions. So I'm not going all those kind of detail with you. Let us discuss
a simple concept. What is the difference between voltage and an EMF? What is a battery? There is a way we define the battery in a chemistry. But for physicists, it is a source of current for me. What is the meaning of the source of current for me? How the current is going to flow? Suppose if I take a resistive load, if I take a resistive load and put across a battery, a current would pass through it. If I use a simple Ohm's law and I put a voltmeter and a current meter in the circuit, and if I measure when there is no resistance in my circuit, if I measure the voltage across the battery, and if I now put a load or resistance across the battery, if the voltage across the battery changes, mean where this voltage is getting dropped. You have to think about it. The simple answer would be, I'm trying to draw more current out of this battery, what is the capacity is. Or there may be an internal resistance of the battery. So, mean a battery would be an ideal battery source for us, the internal resistance. So, Ohm's law remains the same, but practically the battery would be replaced by ideal battery plus a resistance, which is a internal resistance of a battery or a voltage source. Similarly, a concept which we discuss in school level is a semiconductor. Some people, pronounce this as a semiconductor these days, but okay, semiconductor. What is a semiconductor? If I tell you that the physics cannot go alone with the understanding of the chemistry. So all these things, why when you're looking for any science course, they are insisting that go for PCM. I mean, they know it, that the physics required, mathematics is also required chemistry. So let us take the example of a semiconductor. The first definition which comes across to mind is somebody that it is somewhere between an insulator and a conductor. Insulator is one in which current can flow. Conductor could be a thermal conductor, but let's confine ourselves to electrical conductor. Electricity can pass. There is no obstruction. There is no way it can freely move. And there is a insulator. Whatever the voltage may be, the current may not pass. Then we call it something which is in between is the semiconductor. This definition is not wrong, but it's not complete. So let us try to understand the concept of semiconductor. What is a semiconductor? For a very simple thing, we know the chemistry people talk about the chemical table. They are the group, vertical ones are the group, and the group 4. The meaning of group 4 means the outermost shell has 4 electrons. And they say that for stability, there is a fixed formula which says 2, 8, and so on. Mean, if I talk about the inherent gas, they have the outermost shell complete. So, not going more of a chemistry, let us confine back to group 4 and take the example of either germanium or silicon. If you take some germanium material or silicon material, there's going to be a lot of atoms. And when you talk about a single atom, there are levels, energy levels, and there is a method of filling the electrons on a particular levels, like 1s, 2s, 2p, and 3s. In the case of germanium and silicon, following those chemistry, following principle, they have outermost shell having a 4 electrons. So there is a one atom of silicon or germanium, and there is another silicon atom, germanium atom. There are a lot of atoms around that. So the atomic levels overlaps with the, how we call it, energy levels of one atom and another atom. When a lot of overlapping of that take place, depending on the interatomic distance, etc.,
these level becomes the bands, and the topmost filled or partially filled is known as the valence band, and then you have a band gap, then you have a conduction band. The band gap, if it's very high, so from going from valence to conduction band, you need a more energy. अगर बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा तो कंडक्शन के लिए आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए. एनर्जी को अगर मैं वोल्टेज की फॉर्म में लिखूं तो E इंटू वी इज माई एनर्जी, यानी कि मुझे ज्यादा वोल्टेज देनी पड़ेगी. तो हो सकता है कि मैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल के कंडक्शन बैंड में भेज दूं तो मेरा कंडक्शन हो जाएगा. ठीक है जी. तो अगर बैंड गैप कम है या बैंड गैप 0 है, कुछ जगह पे नेगेटिव बैंड गैप की भी बात होती है, तो कंडक्शन हो जाएगा. तो यानी कि कंडक्टर वालों को डिफाइन करने के लिए एक तरीका ये भी हो गया कि बैंड गैप कम होना चाहिए. इंसुलेटर में बैंड गैप ज्यादा होना चाहिए. तो जिन मटेरियल का बैंड गैप ना तो कम है या ज्यादा, उसको हम सेमीकंडक्टर कह देते हैं. दिस डेफिनेशन इज एक्सेप्टेबल up to school level, but it's not complete, but we are not going to go beyond that. So now we go for a material which has 4 electrons in the outermost shell. अब किसी को भी एटम को स्टेबिलिटी चाहिए. स्टेबिलिटी के लिए केमिस्ट्री वाले कहते हैं उसका आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट कर दीजिए, तो ऑक्टा बना दीजिए. इफ दे आर 8 electrons, they are stable. If there are 8 electrons, they are 4. So we call it somewhere the ionic bond. Ionic bond का मतलब ये होता है कि आयन बन जाता है. एटम आयन तब बनता है जब उसमें से या तो एक इलेक्ट्रॉन चला जाए या एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए. It becomes ion. So you have an ionic bonding. But 4 एटम उसको चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए टू बिकम स्टेबल. और दूसरा कहता है 4 अपने छोड़ दे तो भी स्टेबल तब भी बन जाएगा. सो उसको 4 कंप्लीट के लिए चाहिए और 4 अगर वो लूज करता है तो भी स्टेबल हो जाता है. तो इट इज a 50-50. So chemist people say that we go for what is known as the covalent bonding. तो एक सिलिकॉन एटम के अराउंड 4 सिलिकॉन एटम हो गए और एक एटम एक इलेक्ट्रॉन उन्होंने आपस में शेयर कर लिया. सबको ये लगता है कि सबके पास 8 हो गए स्टेबल. अब इस सिस्टम को हम कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. लेकिन कोई भी नेचर में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर नहीं होता. या तो एन टाइप होता है या पी टाइप होता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन टाइप? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पी टाइप? If I have a silicon or germanium atom and if I dope, let us know the meaning of word doping. We mix 2 liquid. हम घर में रूह अफ़ज़ा बनाते हैं. We take 2 spoon of रूह अफ़ज़ा and then we add a glass of water and drink it. Sometimes we make नींबू पानी, नमक. We put a half spoon of salt and. But the doping is not that. It is something 1 in 10⁻⁶ part per million. यानी कि if I have something outside component which is 1 in the cloud of 10⁻⁶, that is what is known as the doping. And this few atoms in the collection of 10⁻⁶ atom of different kind, the property altogether changes. That is the quality of word doping. आप 2 liquid को suppose you take 2 metals and you diffuse them, ठीक है, you make another metal, ठीक है. They may or may not have the characteristics of the individual metal, but here if you add some foreign atoms inside a silicon material which may be a trivalent or pentavalent. Trivalent का मतलब है उसके आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है, पेंटावेलेंट उसमें 5 है. अब जब आप 5 वाले को डालोगे उसके अराउंड अगर सिलिकॉन है तो 5 में से 4 से तो उनका हैंडशेक हो जाएगा. जो 5वां इलेक्ट्रॉन है
वो बेचारा घूमता रहेगा। तो उसके सिस्टम में एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो गया, तो वी कॉल इट दैट टू बी ए एन टाइप सेमीकंडक्टर। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुआ, एन बन गया, नेगेटिव ज्यादा है। अब instead of doping with a pentavalent, we dope with a trivalent. Trivalent का मतलब है it has 3 electrons in their outermost shell. अब क्या है? If I ask you a very simple question, suppose there are 8 chairs in a room, and suppose there is only one man to occupy any of that chair. What is going to happen in reality? आदमी एक चेयर पे बैठेगा, उसके बाद उठेगा, दूसरी चेयर पे बैठेगा, you keep on moving from one chair to another chair. खाली बैठा हूं इधर से। So the movement of this one man in this for 8 chair available freely घूमता रहेगा. This is the case of a conductor. Suppose there are 6 person and there are 8 chairs. So घूमना कम हो जाएगा, freely movement of man would be restricted. So we are going from conductor to the insulator. Suppose ideally there are 8 people and 8 chairs. What is going to happen? You would say nothing is going to happen, everybody would sit idly. So there should not be any conduction. So this is the example of a pure insulator, which is हिल ही नहीं रही है। तो इलेक्ट्रॉन, अगर मैं इस आदमी को if I replace with the electron or a free charge particle, तो there will not be any conduction. Conduction का मतलब है कि चार्ज मेरा मूव होना चाहिए, और जब हम चार्ज की बात करते हैं तो सबसे हल्का चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन है। तो हल्की चीज जो होती है उसका मूवमेंट आसान होती है। That is why if somebody asks you to define current, you normally define the movement of the movement of electrons और उसकी उल्टी डायरेक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज है। तो जो नेगेटिव है उसको क्यों पकड़ा? क्योंकि इट इज मच लाइटर देन इज काउंटर पार्ट पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि जो हल्की चीज होती है उसकी मूवमेंट आसान होती है। तो दैट इज व्हाई द करंट इज डिफाइंड fundamentally the movement of electrons rather than the positive charge. Similarly, I said that if you have one man with one electron and which can move in 8 different positions, ठीक है, 3s2 and 2p6, और उसमें आपको 4 भरने हैं, कभी वो 3s में बैठेगा, कभी 2px में चला जाएगा, कभी 2py में चला जाएंगे, घूमते रहेंगे, आसानी होगी, तो मूवमेंट होगी इलेक्ट्रॉन की, कंडक्शन होगा। अगर पूरे 8 फिक्स हो गए तो थ्योरेटिकली कोई मूवमेंट नहीं है चार्ज पार्टिकल की, यानी कि हमारे इलेक्ट्रॉन की, तो करंट नहीं होगा। लेकिन रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। 8 आदमियों को 8 कुर्सियों में बिठा दो, कुछ ना कुछ हिस्से रहते हैं। दैट इज व्हाट एग्जैक्टली हैपन इन केस ऑफ अ practically insulator. You may call it to be it does not conduct, but it is still conduct. But still conduct means you have a very small movement, because there is a lot of movement. इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे भी स्पिन करता है, स्पिन कर रहा है तो भी तो घूम रहा है, अगर घूम रहा है तो करंट होगा। लेकिन हाँ, एक कुर्सी से दूसरी कुर्सी में जाओ, यू कुड सी अ मेजर चेंजेस इन दी, यू कैन सी द मूवमेंट। एक आदमी अपनी कुर्सी पे हिल रहा है, तो electron is occupying a particular position, but still there is some movement. It could be a spin movement, it could be a rotational movement. Okay, so there is always a very small current available. Mean there is nothing like a pure insulator, mean कि जिसका resistance infinity हो, ऐसा कोई material नहीं होता। यानी कि reality जिसको भी हम insulator कहते हैं उसमें थोड़ा सा current होता है। सिमिलरली कोई भी ऐसा मेटल नहीं होता जो प्योर आपको करंट दे जिसमें रेजिस्टेंस 0 हो। ओनली द केस ऑफ सुपर कंडक्टर वेयर यू से दैट देयर इज नो रेजिस्टेंस, मीन द इलेक्ट्रॉन कैन, द चार्ज पार्टिकल कैन मूव वेरी फ्रीली। Otherwise, all metals they have some finite resistance. Resistance mean it's stopping the charge particle to move.
कम होता है रेजिस्टेंस, लेकिन होता है। सिमिलरली जब हम बीच में आते हैं, अब 8 आदमी 4 तो वो घूमेगा भी, लेकिन अब हमने क्या किया, उसके पड़ोस में ऐसे एक एलिमेंट को ले आए, एक एटम को ले आए जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसने 4 के साथ तो दोस्ती कर ली, ये जो 5वां है बेचारा ये खाली है, ये उठता है 7 वाले इलेक्ट्रॉन के पास चला जाता है, वहां वो उसकी जगह बैठ जाता है, वहां से इलेक्ट्रॉन उठ के कोई और चला जाता है। इसका मतलब वर्चुअली इलेक्ट्रॉन कीप ऑन मूविंग, सो देयर इज अ मोशन, so there is going to be current, because the current is because of the electron, we call it a n type. अब आते हैं p type। हमने क्या किया कि बाहर से डोपिंग की। ऑलरेडी एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ डोपिंग इज नॉट कि आप बहुत ज्यादा, यानी कि 1 लाख में 2 या 3 फॉरेन एलिमेंट डाल दीजिए, इसकी प्रॉपर्टी सारी बदल जाएगी। दैट्स द मीनिंग ऑफ डोपिंग। इट इज नॉट लाइक आई गिव यू द एग्जांपल कि 2 आपने मेटल लिए, उनको डिफ्यूज किया, एक नया मेटल बन गया। नहीं, बिल्कुल एक चीनी का दाना डालिए और समुद्र में, तो उसका टेस्ट बदल जाए। तो दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोपिंग। तो 1-2 आपने सिर्फ ट्राईवैलेंट या पेंटावैलेंट मेटल डोपिंग डालनी है सिलिकॉन या जर्मेनियम में, ऑल दिस प्रॉपर्टी वुड चेंज। अब आते हैं विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज द पी टाइप सेमीकंडक्टर। आपने एक एटम डाला जिसके आउटर मोस्ट में 3 है, और कोवलेंट बॉन्ड के लिए उसको 4 लोगों से दोस्ती करनी है, हैंडशेक करना है, क्योंकि सिलिकॉन के पास 4 है, इसके पास 3 है, तो 7 बने 1 चाहिए। तो होता क्या है, एक कहीं और से उठ के यहाँ आ जाता है, यहाँ इसको 8 मिल गए, लेकिन जहां से उठ के आया वहां 1 कम हो गया। उठ के क्या आया था, उठ के इलेक्ट्रॉन यहां से आया था, लेकिन लगता ऐसे है कि ये जो पोजीशन खाली थी, बिकॉज 3 थे तो चौथी पोजीशन खाली थी, एज इफ दिस वैकेंसी, दिस पोजीशन और दिस चेयर जो अब भर गई है, ये चेयर यहां से खाली थी, वो वहां खाली होगी, तो हमें ये लगता है कि चेयर मूव हो रही है। देयर इज नथिंग लाइक equivalent positive charge in case of a p-type material, there is a vacancy। ये कुर्सी खाली थी, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं फ्री होते हैं, वहां से उठा हुआ यहाँ आके बैठ गया। और इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं नॉन डिस्टिंग्विशेबल, यानी कि उसका नाम नहीं रख सकते आप, सारे इलेक्ट्रॉन एक जैसे होते हैं, सिर्फ डिस्टिंग्विश होंगे कि उनकी स्पिन अगर आप देख सकते हैं कि वो क्लॉकवाइज मूव हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मूव हो रहा है, बाकी उनका कोई नाम अजय और राम नहीं होने वाला, दे आर नॉन डिस्टिंग्विशेबल। तो एक इलेक्ट्रॉन उठ के आया, यहाँ पे 3 थे, चौथे में आके बैठ गया, तो वहां वैकेंसी होगी। वी फील एज इफ द वैकेंसी हैज मूव्ड, इसको हम कहते हैं होल। अब आपको कहा जाए कि आप घूम लीजिए या कुर्सी को घुमा लीजिए, मुझे लगता है मेरा, यानी कि इलेक्ट्रॉन का घूमना आसान है। सो द कंट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको हम एक वर्ड यूज करते हैं मोबिलिटी। मोबिलिटी का अगर सिंपल सा मीनिंग समझा जाए, आप कितने आराम से मूव हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन मूव होना हल्का भी है, घूम सकता है, लेकिन वैकेंसी का मूव होना मुश्किल है, कुर्सी को उठा के लेके जाएंगे तो भारी भी है। तो इक्विवेलेंट में हमने कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया होल। होल का मतलब होता है एक वैकेंसी, उस वैकेंसी को ऑक्युपाइड कर दिया आपने दूसरे इलेक्ट्रॉन से, तो बेसिकली होल एज इफ द होल हैज मूव। तो इसके अंदर कंडक्शन मैकेनिज्म जो होगा वो उस वैकेंसी के एक जगह से दूसरी जगह की वैकेंसी क्रिएट होने की वजह से होगा, तो हमें लगेगा एज इफ दिस वैकेंसी हैज मूव। तो कंडक्शन मैकेनिज्म वुड बी गवर्न बाय वैकेंसी व्हिच इज नोन एज द होल मोबिलिटी, यानी कि होल की वजह से हो रहा है। तो हमने 2 तरह के सेमीकंडक्टर बना लिए, एक एन टाइप और एक पी टाइप। नेचर में लेट मी टेल यू दैट इफ यू ट्राई टू फाइंड आउट अ प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यानी कि प्योर सिलिकॉन आप ढूंढिए, नहीं मिलेगा। नेचर में भी उसमें कोई ना कोई इनबिल्ट इम्प्योरिटीज होंगी। और हमारी तो मैंने बोला कि 1 × 10⁶ में भी अगर एक चीज ऐसी आ गई तो उसकी प्रॉपर्टी बदल जाएगी। तो नेचर में तो या तो आपको पी टाइप मिलेगा या एन टाइप मिलेगा, लेकिन पी टाइप और एन टाइप का 2 सेमीकंडक्टर हमारे किसी काम के नहीं है जब तक कि हम इसकी डिवाइस ना बनाए। आज आपके सबके पास, चाहे आप टीवी पे देख रहे हो, मॉनिटर पे या अपने फोन पे,
All these are electronic devices. Basic device on which it works is a semiconductor. Different material, different structure, but basic device is a semiconductor. हम ये N टाइप का सेमीकंडक्टर मिलेगा या P टाइप का मिलेगा, मैं इन दोनों को जोड़ के PN जंक्शन बना सकता हूँ? नहीं बना सकता. It is not that bread 1, bread 2 and I put some butter and make a sandwich. No, it's not like that. What I do is I take either N or P. N लिया तो इसके अंदर क्या था? इसके अंदर एक्सेस में पेंटावेलेंट था. अब मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर एक लेयर बनाता हूँ. जो लेयर होती है बहुत पतली होती है. पतला मीन इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू नैनोमीटर. ट्राइवेलेंट की. Now we go with a simple thermodynamics. Diffusion process. Diffusion क्या होता है? आपको डिफ्यूजन का मतलब समझ आना चाहिए. बहुत आसान है. ग्लास में पानी लीजिए. जब हम बच्चे थे तो हम इंक यूज करा करते थे. आजकल लोग इंक पेन नहीं यूज करते. आप उसके अंदर रूट अफ़ज़ा डाल दीजिए. सी दैट इट गेट डिफ्यूज अल्टीमेटली. आप इसको हीट करिए. What is going to happen that this trivalent would now get diffused into the P1. ऊपर से N आ रहा है, P आ रहा है, नीचे N है. तो पहले तो उसमें एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, पहले तो न्यूट्रल हो जाएंगे और ज्यादा ज्यादा करते जाएंगे तो ऊपर P बन जाएगा, नीचे N था. ये जंक्शन बन गया. Let me tell you the difference between the word junction. Junction क्या होता है? जंक्शन का नाम सबसे पहले अगर मेरे से पूछा जाए तो हम रेलवे स्टेशन के कॉन्टेक्स्ट में वर्ड सुनते हैं जंक्शन. जंक्शन वो जगह होती है जहां पे दो डिफरेंट डायरेक्शन की ट्रेन आके मिलती है. नॉट एवरी स्टेशन इज ए जंक्शन. तो कम से कम दो डिफरेंट डायरेक्शन से जब ट्रेन आके जहां मिलती है, अप एंड डाउन की बात नहीं कर रहा हूं, उसको जंक्शन है. आपने पीएन जंक्शन बना लिया. अब केमिस्ट्री का सिंपल सा प्रोसेस होता है कि एटम में से अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो क्या होगा. अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो उसके ऊपर एक प्लस साइन बन जाता है. इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल सा मतलब ये है कि दिस इज बिकम ए पॉजिटिव आयन. अगर एक इलेक्ट्रॉन उसको मिल जाए और तो एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, वो नेगेटिव आयन हो गया. तो यू हैव ए पॉजिटिव आयन एंड ए नेगेटिव आयन. इसको एक मिनट के लिए यहाँ रोकते हैं. बैटरी क्या होती है? हमने बैटरी पढ़ी थी केमिकल में. ड्राई बैटरी, वेट बैटरी. क्या था? एक इलेक्ट्रोलाइट लिया, दो इलेक्ट्रोड डाल दिए, एक पे पॉजिटिव साइड बन गई, एक पे नेगेटिव साइड बन गई और उनके बीच में ईएमएफ इंट्रोड्यूस हो गया, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस हो गया. तो अगर एक तरफ पॉजिटिव बन जाए, एक तरफ नेगेटिव बन जाए, तो वो बैटरी का काम करती है. बैटरी का कंसेप्ट यही होता है. अब हम चलते हैं वापस अपने पीएन जंक्शन पे. हमने जंक्शन बना दिया. अब एन में क्या है? एन में तो इलेक्ट्रॉन एक्सेस है. इधर क्या है? इधर में वैकेंसीज एक्सेस में. तो भागते हैं. ठीक है जी. जहां पे जो ज्यादा है वो, जहां पे लोग ज्यादा है, यहाँ पे कुर्सियां ज्यादा है, तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन भागेंगे और उन कुर्सियों पे बैठना शुरू हो जाएंगे. जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ तो पॉजिटिव आयन बन जाएगा. सिमिलरली यहाँ के वैकेंसीज कम हो जाएंगी तो यहाँ पे नेगेटिव आयन बन जाएगा. तो नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन, दो अलग अलग. और उसके बाद में ये जो आयन, यहाँ का पॉजिटिव आयन जो है वो और इलेक्ट्रॉन को आने के लिए रोकेगा. तो इनके दोनों के बीच में बैरियर बन जाएगा. व्हाट इज द बैरियर मीन? यू कांट क्रॉस ओवर इट. तो पीएन जंक्शन में एक पोटेंशियल बैरियर बन जाता है. एंड डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल व्हिच यू आर यूजिंग, इफ इट इज एन टाइप जर्मेनियम, तो उसकी एक अलग बैरियर की वैल्यू होती है व्हिच इज अराउंड 0.6 वोल्ट. अगर सिलिकॉन है तो 1.2 वोल्ट.
अगर अब मैं चाहूं कि यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस तरफ आ सके, तो उसके पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि ये 1.2 वोल्ट के बैरियर को क्रॉस कर सके। ठीक है जी। लेकिन बहुत लोग स्मार्ट भी होते हैं, कई बार ना बीच में से खिसक जाते हैं, उसको हम कहते हैं टनलिंग। टनलिंग, टनल का क्या मतलब है? बीच में से छेद की आग घुस गया, तो टनलिंग हो सकती है। लेकिन नॉर्मल में अगर मेरे आगे एक पहाड़ है जिसकी हाइट 1.2 वोल्ट है, अगर जर्मेनियम का पहाड़ बना, पहाड़ क्यों बना? इधर पॉजिटिव आयन बना, इधर नेगेटिव आयन बना, तो ये बैटरी की तरह बन गया। बैटरी है तो इसकी वोल्टेज होगी 1.2 वोल्ट। अगर मुझे इस 1.2 वोल्ट के पहाड़ को क्रॉस करना है, तो इससे ऊपर की वोल्टेज होगी, तभी क्रॉस होगा। ठीक है जी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दी टनलिंग। इसीलिए जब हम पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करते हैं, तो ये जो 1.2 वोल्ट का बैरियर है, जब तक इससे ज्यादा वोल्टेज नहीं देंगे, करंट नहीं आता। और जैसे ही आपने इस बैरियर की वोल्टेज, यानी इस पहाड़ी जिसकी हाइट 1.2 वोल्ट है, उससे ज्यादा दोगे, वो तो खुला हुआ है, तो करंट एकदम शूट करता है। When you draw the forward characteristics of a PN junction, you get zero voltage, zero current up to some voltage, इसको नी वोल्टेज कहते हैं। यानी कि जब तक बैरियर हाइट से कम वोल्टेज होगी तो आप इसको क्रॉस नहीं कर सकते। जैसे ही बैरियर की वोल्टेज से ऊपर आओगे, एकदम हो जाएगा, यानी कि करंट फ्लो करेगा। करंट फ्लो करेगा, जैसे आप एक स्विच को ऑन करते हैं, ऑन हो गया। अब आते हैं रिवर्स बायस। रिवर्स बायस का मतलब है कि पी पे नेगेटिव साइड ऑफ द बैटरी, एन पे पॉजिटिव साइड ऑफ द बैटरी। तो ये जो बैरियर है, अब ये और बढ़ना शुरू हो जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जैसे बढ़ेगा तो बेचारा करंट, यानी कि चार्ज उसको पास ही नहीं कर पाएंगे, तो करंट नहीं होगा, ऑफ स्टेट में रहेगा। तो रिवर्स बायस में ऑफ रहेगा, फॉरवर्ड बायस में ऑन रहेगा। और कब तक ऑन रहेगा? जब तक कि आप उसकी बैरियर वोल्टेज के बराबर नहीं आते। लेकिन क्या होता है, रिवर्स बायस में ऑफ रहता है, नहीं मिलता करंट, वो थोड़ा सा मिलता है। वो मिनॉरिटी कैरियर की वजह से होता है, और वो टनलिंग इफेक्ट्स की वजह से। लेकिन एक बार क्या होता है, जब आप वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं, तो दो चीजें होती है। एक, इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी मिलती है, थर्मल एनर्जी बढ़ जाती है, तो जो बॉन्ड है वो टूट जाते हैं, सारे बॉन्ड टूट गए। जैसे आपका पानी रुका हुआ है और वो बांध टूट जाए, एकदम पानी बाहर निकलता है, उसको वर्ड यूज करते हैं एवलांच। एकदम जैसे बाढ़ आ जाती है। आप वोल्टेज देते जा रहे हैं रिवर्स बायस में, रिवर्स बायस में वो कहता है भैया मैं तो इस, ये बैरियर इतना था, ये बढ़ गया, बढ़ गया, बढ़ गया। लेकिन क्या हुआ, जब आप वोल्टेज ज्यादा दिए जा रहे हैं, तो उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, थर्मल एनर्जी बढ़ गई, उसकी वजह से जो कोवलेंट बॉन्ड थे, जुड़े हुए थे, वो टूट गए, एवलांच हो गया, तो एकदम बहुत ज्यादा करंट बढ़ जाता है। तो अगर आप इस तरह के कॉन्सेप्ट पूछेंगे, तो कोई आपसे पूछेगा बताइए ये थोड़ा सा करंट क्यों दिखता है? भाई थोड़ा सा करंट इसलिए दिखता है कि जो मिनॉरिटी कैरियर है वो टनल होकर निकल जाते हैं। एकदम जाके करंट क्यों बढ़ता है? क्योंकि आपने वोल्टेज बढ़ाई, उससे उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई और थर्मल ब्रेकडाउन हो गया। अब सारे बॉन्ड जो आपस में कोवेलेंट बॉन्ड, मैं अपनी भाषा में एज ए फिजिसिस्ट कोवेलेंट बॉन्ड को हैंडशेकिंग कहता हूँ। 4 आदमी और 4 पड़ोसी, सबने एक एक हाथ मिला लिया, तो 8 हाथ हो गए, ऑक्टा हो गया। आई एम वेरी हैप्पी, केमिस्ट पीपल आर वेरी हैप्पी, स्टेबल हो गया। लेकिन एक्चुअल में तो उनके पास 4 ही हैं। लेकिन आपने इतनी वोल्टेज दी, वो हाथ उनके एक दूसरे से टूट गए, तो जैसे ही टूटे इलेक्ट्रॉन तो फ्री है, एकदम सारा बाढ़ आ जाती है electrons key, and then what you get the avalanche. So my idea was not to teach you physics at this time, just to read your NCRT book from the concept wise. As an individual, I feel that the idea of this CUET is what you have done in physics across different boards, they would be evaluated on the same platform. Where you have other entrance exam, आप में से बहुत बच्चों ने नीट का एग्जाम दिया होगा, जेईई का एग्जाम दिया होगा, there
the application is altogether different. उस तरह की एप्लीकेशन नहीं आने वाली है. ये बेसिकली आपका जो डोमेन है एनसीईआरटी की जो किताबें हैं, वेल रिटन बुक्स, उनको आपको कंसेप्ट समझने हैं. कोई आप यहाँ बैठ के बोल दे कि ये 50,000 क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आई कैन अश्योर यू कि आप इसमें पास कर जाएंगे. नोबडी कैन मेक दिस स्टेटमेंट. आइडिया इज कि आप एनसीईआरटी की किताब पढ़ें. अगर आपको उसमें आज के दिन में और जब आपने अपना 12th का बोर्ड एग्जाम दिया था, फर्क ये है कि उसमें आपके पास ज्यादा प्रेशर है. कभी भी परफॉर्मेंस किसी कलाकार की, किसी आर्टिस्ट की, किसी स्टूडेंट की अच्छी नहीं होती जब उस पर प्रेशर हो. एज ए इंडिविजुअल आई फील, टेक दिस लाइटली, इंजॉय करके पढ़ो, खुशी से पढ़ो. आप सीखोगे, और सीखोगे तो क्या पूछने वाले हैं वही तो पूछने वाले हैं जो एनसीईआरटी में लिखा है. भैया कोई नया चीज हमें भी नहीं आती है, वहीं से पढ़ेंगे. मेरे जैसा कोई उसी में से क्वेश्चन बनाएगा, उसको रात में सपन दृष्टि नहीं होगी कि उसको कोई नए क्वेश्चन दिमाग में घुस जाएंगे. द ओनली थिंग इज कि एज ए पेपर सेटर ही इज गोइंग टू रीड कंप्लीटली और उसमें से वो पढ़ेगा. आप अगर एनसीईआरटी की किताब लेके उसको किसी भी सब्जेक्ट के, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एनी एंड एवरी सब्जेक्ट. इट इज नॉट के दे आर लुकिंग इट कि इस क्वेश्चन को टेढ़ा करके इसमें ये वाला टेढ़ा मिला के बताइए ये कैसा होगा. इस तरह के क्वेश्चन एक्सपेक्टेड नहीं है. स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, लेकिन आपके और आपके दोस्त को डिस्टिंग्विश करने के क्वेश्चन है. तो आपको उन सबसे अच्छा बनने के लिए पहले आप एंजॉय करिए इस किसी भी चीज को, पढ़ने को एंजॉय करिए. यू विल फाइंड आउट नथिंग इज डिफिकल्ट. So I would simply request you, read your NCERT book. प्रॉब्लम है अभी स्कूल्स में कांटेक्ट में है. आई डोंट माइंड शेयरिंग माय email with you, and if I could be of help to any and everybody, I'll be very happy to do that. So if you have any specific question, please share, and with the permission of the Pumunam, I think I've taken much time, but I always interact subject like enjoying it rather than giving you a formula a square plus b square plus 2ab. ठीक है जी, वो बताते हैं a square minus b square which is a minus b to a plus b. So all things you know it. सिर्फ देखना है और समझना है कि इस क्वेश्चन के पीछे वो क्या चीज हमारी टेस्ट कर रहा है. Beyond this NCERT, beyond this syllabus, you have nothing to worry. अगर आप वही प्रिपेयर कर लेंगे with full mind, you're going to perform very well. You are all capable. सिर्फ एक डेडिकेशन है जो किसी को जिताती है, और वही डेडिकेशन ना होने की वजह से वो हारता है. रिजल्ट कुछ भी मिले, with sense of sincerity and confining yourself to NCERT, I think you can achieve any and every goal in your life. All my good wishes to you. With the permission of Poonam, I just stop my unnecessary lecturing you. Thank you. Not at all, sir. Thank you so much, sir, for your wonderful session. You explained the toughest subjects. At least I feel physics is the toughest in a simplest way. I'm sure your talk is useful as far as application of questions to find the answers are concerned in a simplest way. And the best thing, as sir told, that enjoy learning. Give your best. Hard work and sincerity are the keys for the success. And follow NCERT. Thank you so much, sir. Now I call upon Dr. Shikha as the coordinator of today's program to continue the session. Thank you, Dr. Poonam. Am I audible? Yes, Dr. Shikha. Okay, thank you. Good afternoon, everyone. On behalf of organizing committee, I welcome you all to the second session of this afternoon. And in this session, we have Dr. Poonam with us. Dr. Poonam is currently working as an assistant professor of chemistry at Miranda House since 2015. She has an experience of teaching postgraduate and graduate students and uses innovative and pedagogical teaching and research. Dr. Poonam is leading an independent research group of doctoral students, postgraduate and graduate students in her research laboratory. She was a guest editor for the special issue of
current topics in medicinal chemistry and chemical biology letters. Dr. Poonam has received several research grants as PI and co-PI during the last 7 years. She has published more than 40 research articles in high impact factor international journals. Also, 3 book chapters to her credit. Now, I would like to invite Dr. Poonam for this session on chemistry. Over to you, Dr. Poonam. Thank you so much, Dr. Shikha, for such a warm introduction. Uh, Myself, Dr. Poonam, and today I will take this domain-specific subject, that is chemistry. So let me share my presentation with you all. So is my screen visible to everyone? Yes, ma'am. Okay. So in this, as we all know that we are here for this orientation cum guidance program for Common University Entrance Test CUET, and today we will discuss basically about the chemistry. So before going for this entrance test, we should know the syllabus of this test. So this syllabus is available on NTA website as well as on the DU website. And if you see this, we all know that chemistry contains physical chemistry, inorganic chemistry, and organic chemistry. So before appearing for this exam, I will recommend you all to see the syllabus and follow this syllabus sincerely. You can have this syllabus on these two sites which I have mentioned here. And here you can see that in the physical chemistry, you have to study solid state solutions, electrochemistry, chemical kinetics, and surface chemistry. In case of inorganic chemistry, you have to see and you have to study the general principle and process of isolation of elements, P block elements, D and F block elements, coordination compounds. And for as far as organic chemistry is concerned, you have to study haloalkanes, haloarenes, alcohols, phenols, ethers, aldehyde, ketones, carboxylic acids, and organic compounds containing nitrogen. So in all these compounds, you have to study their preparations, their physical properties, their nomenclature, and their reactions. Apart from that, you also need to know about the biomolecules like carbohydrates, proteins, and hormones, polymers, and chemistry in everyday lives, like the role of medicines in chemistry and the chemicals in food which are present, and cleansing agents, soaps and detergents at all. So this syllabus is very specific and it is very important to be thorough with this syllabus so that you will able to do all the questions properly. So before starting with the questions which may be expected or the pattern of the questions which may be expected, I would like to give you a brief about the details of exam pattern. So this CUET we all know is Common University Entrance Test. Just a second, yeah. And the medium of instruction will be any one language which you have chosen. And the question paper in the chemistry exam, there will be total 50 questions which will come and you have to attempt 40 questions. So you have to attempt 40 questions out of 50 and each question will carry 5 marks. So 5 multiplied by 40, the total marks for the chemistry paper will be 200. The questions type will be MCQs, multiple choice questions, and all are objective type. And the time you will get to solve the 40 questions will be 45 minutes. It will be a computer based test. And yes, there will be a negative marking. So if you will mark a correct answer, you will get plus 5 marks. And if you will get a wrong answer, if you will take a wrong answer, the 1 mark will be deducted. And there will be and if you leave any question unanswered, it will have 0 marks. So now we understood that the syllabus is very important. We also understood the exam pattern. Now I will discuss with you few questions or the pattern of the questions or the nature of the questions which could be asked.
So we all know that multiple choice questions will come. So if we see this question, so multiple choice question means you will get a question and you will get four answers of that question. सर मैं And लिखूं नहीं, मैंने बता दिया मैं नहीं लिखूंगा please mute yourself, मैं नहीं कर पाऊंगा मैं बहुत दूर से सर आप दूर से आए हैं लेकिन सर मैं नहीं कर Dr. पाऊंगा Shikha. कल लास्ट डेट थी Can you हमने please ask तीन बार कर anyone who नहीं हो is, I पाएगा can't be able to see that. सर मैं पैर पकड़ूंगा आप नहीं प्लीज Sir, Okay, so Professor Arora, I request you to kindly mute. Thank you. okay, so this is first question, and multiple choice question means you will get one question and you will get three or four answers, and you have to take a, a correct answer. So if I read this question for you, that what is the monomer of nucleic acids and which type of linkage is present between two monomers? So these are the monomers unit which is written, and these are the linkages which are written. So first you have to read the question carefully, and then you see they are asking about nucleic acid. So you have to keep recalling what are nucleic acids. So if you will see and you have studied it properly, then you will see that this is the structure of nucleic acid. Nucleic acids are RNA and DNA. They are nothing but nucleic acids. So if you will see here, so this is a nucleic acid chain, and here the monomer unit, which is the repeater unit, it is base, sugar, and phosphate linkage. Base, sugar, and phosphate linkage. So base, sugar plus phosphate linkage is nothing but a nucleotide. So nucleotide should be the answer. And the linkage between the two monomer unit is phosphodiester linkage. Here you can see in this. So phosphodiester, so the answer should be B, that is nucleotide and phosphodiester. Again, when how you can solve this question, when you will come to know, when you know the structure of the nucleic acid. So that is really important, that you should read the syllabus, you should thorough with the syllabus to solve all questions. This is the second question. This question is from inorganic chemistry, and this is the question is, identify the gas which is readily absorbed by activated charcoal. Now, again, you can see that there are four options. And if you know, if you see all these four options, you can see that there are three gases like nitrogen, hydrogen, and oxygen, which are elemental gases, whereas SO2 is the one which is different than all these three. This is not an elemental gas. Okay. So, and the question, if you will read again, it shows that the gas which is readily absorbed by activated charcoal. So you should know that if you will read chemistry and books, NCRT books, then it has been mentioned that easily liquefiable gases like SO2, NH2, ammonia, carbon dioxide, they are absorbed to a greater extent than the elemental gases like nitrogen, oxygen, or hydrogen. So you can see the question, you can see the answer, and you can use the elimination method for performing the for attempting the question. So here you can see all of these are elemental gases, and this is the one which is different, and this is easily liquefiable gas in comparison to others. So this the answer would be SO2. Now I would like to come to the third question. So here this question is based on SN2 reaction mechanism. So which of the following will undergo SN2 reaction faster? So again, there are four options, and you can see that in these four options there are alkyl halides. So SN2 reactions, they are shown by alkyl halides, and they are primary alkyl halides and this second and the tertiary alkyl halides, secondary alkyl halides. Now in this case, you can see that the halogen is also different. Chlorine is there and iodine is there. So whenever such type of questions come, then you should remember about the SN2 reaction.
So SN2 reactions are the one in which the nucleophile attack the electrophile. I hope you all know about, you should know about the electrophile and nucleophile from the backside, and the halide ion then leave. Okay, so in this case, a good halide ion is a good leaving group. A good leaving group is a better halogen that will undergo the reaction faster. So the reactivity of alkyl halide here will be the one methyl halide, then primary, secondary, and tertiary. Why? Because the backside attack will be faster in case of primary alkyl halide. If there is a tertiary alkyl halide, there will be a steric hindrance and nucleophile will not going to attack from the backside. So, and if we see the reactivity of these halogens, then Ri, because iodide ion is a better leaving group, so because of the increased reactivity, so the answer here would be the second one, which is a primary iodide. So ethyl iodide will be the only one. So these will eliminate because of the steric hindrance, and this will eliminate because of the halogen present. Okay. This question is the basically it is a direct question, and here they are asking about the SI unit for energy is joule. The SI unit for energy is joule. This unit is equivalent to what? So in this case, you need to know the value of joule, the equivalence of joule. So this is a direct question, and when if you are thorough with your syllabus, then only you can solve it. So there is no mind you have to use. Only you need to know the value or equivalent of joule, and here the answer is kilogram meter square per second square. So some questions would be direct questions where you need to know the answer. Some questions will be indirect. Some questions would be reasoning based. So there are in chemistry there are so many questions which are possible, and hopefully as far as NTA is concerned, they will make the question paper keeping in mind all the students and their intellectuality. So they can give you direct question also, multiple choice. They can give you indirect questions also, reasoning based questions also. So how you will going to solve it, that depends on you, and that depends on how you use your knowledge of chemistry in applying all these questions. Okay, this is a question which I have taken from again NCRT, and this is basically on physical chemistry. So the question is, the freezing point of solution is directly proportional to the freezing points of solutions is directly proportional to. So here you can see that there are four options: molality, molarity, normality of the solution, molality of the solute, grams of solute present. So in this case, when we recall the physical chemistry and when we see the change in temperature, freezing point, it is equal to the freezing point constant and m. And many times it happens that student they confuse with this m and they think that it is a molarity of the solution. No, the answer in this case is molality of the solute. So what is important, you should know each and every term clearly. What is molality, what is molarity, and what is normality, and then you should think, because many students I have experienced that they always think that m is molarity, but no, in this case the change in temperature, it is directly proportional to molality of the solute. Okay, so this is a question from inorganic chemistry, and it is very simple question. The electronic configuration of chromium atom. Chromium atom is present in the periodic table, and Cr is the symbol for that. And in this, the atomic number is 24. So you will get four choices. And here, when you see
24, you can you will just try to write down 1s2, 2s2, 2p6. So you will write the electronic configuration. After writing the electronic configuration, you you will able to eliminate CKR krypton, because it will be the argon which is there, and sorry, and then there will be 3d5 4s1 or 3d4 4s2, 3d3 4s3. So again, this option will be eliminated because 4s3 is not possible. It is always 4s2. This is also eliminated. Now you are left with only these possibilities. Out of these possibility, if you will see here, the d orbital is half filled, but here the s orbital is half filled. Sorry, fully filled. So we all know that half filled and fully filled subshells have got extra stability. So that is also uh, this part is also explained by Professor Ajay Arora in the previous section. So as we all know that half filled and fully filled subshell have got extra stability. So what happens that one of the electron from S, it jumps to the d orbital and it will form the 3d5 4s1. So the right answer for this question is argon 3d5 4s1, and this is 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1. So till now it is argon's configuration, so we can mention this as an argon, and this is 3d5 4s1 because one of the electron jumps to d orbital and it forms more stable half filled d orbitals. Okay, so this is the next question, and this is from organic chemistry. So I try to incorporate the questions from different topics of this syllabus, whether it is organic chemistry, inorganic chemistry, and physical chemistry. So this is very interesting question, and such type of questions could be asked in the exams. Arrange the following alcohols in increasing order of acidic strength. So if such type of questions are asked, then what you will see, you just see the structure, you see the name of these compounds, you try to draw the structure of these compounds, and then see you have to arrange in the increasing order of acidic strength. So जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी उसको आपको लिखना है. अगर आप देखेंगे, it is paranitrophenol, M4 methyl, that is paramethyl phenol, 3,5 dinitrophenol, and 2,4,6 trinitrophenol. जितने ज्यादा nitro, we all know that nitro group is an electron withdrawing group. It will increases the acidity of the phenols. So as the number of electron withdrawing groups increases, electron density on oxygen of phenoxide ion decreases. As a result, the polarity of OH bond increases and ability to release proton also increases. So if you see here, there are nitro groups. There are 2, 4, 6 nitrophenol. So there are more nitrophenols. So it will pull the electrons from here, and there will be a less electron density on oxygen, and this will increase the polarity of this OH bond in comparison to the one in which there are only 2 nitro groups. So the order will be the most acidic would be the fourth one. So this will eliminate. This is the fourth one which is most acidic. Then the next one is third one. So again, this one will eliminate. So B and D could be the answer. And then paramethyl group is an electron donating group. So the answer would be first then. So the answer would be B, because it has 3 nitro groups, 3 has 2 nitro groups, 1 has 1 nitro group, and 2 has electron donating group, which will reverse its effect.
So here, this kind of questions, they used to come in the exams. So you should know about the acidic strength, about the basic strength. So such kind of exam questions could be asked. Okay, so this is the question which I took from your syllabus NCERT book, and this is from biomolecules, carbohydrates. So here they are asking sucrose, lactose, and maltose are the examples of which carbohydrate? So here you can see the options. So we all know that, again, you need to study this. You need to know the structure of glucose, fructose, sucrose. Sucrose, we all know, is a sugar which we eat, which we uses in our kitchens. And so it is a disaccharide. So if you don't know about the lactose and maltose and you know about the sucrose, which is a disaccharide, so the answer here, it would be disaccharide. So if you will see the structure, sucrose, cellobiose, maltose, lactose, they all are disaccharides which can hydrolyze to give monosaccharides like glucose and fructose. So glucose and fructose, they are monosaccharides, whereas sucrose, lactose, maltose, cellobiose, they all are disaccharides. Okay. Yeah. So this question is very interesting, and why I choose this question, just to tell you that in physical chemistry there are so many questions which are problem solving based, and this is one of uh, that. Yeah. So here, this question is from physical chemistry, and they it is based on first order reaction. So you should know about the zero order reaction, first order reaction, second order reaction, which are in your course. So here, a first order reaction has a specific rate constant of 10 raised to the power minus 2 per second. How much time will it take for 20 gram of the reactant to reduce to 5 gram? So this question is a first order reaction question, which is based on the rate constant, and it is from physical chemistry. And here you have to, this is problem based, and you have to solve this. So for solving such type of questions, you should know the formula of first order reaction. So this is the rate constant, K is the rate constant, and the formula of first order rate constant is 2.303 divided by time log of concentration of A naught, that is initial concentration, which is 20 gram in this case, and concentration of the reactant after it get consumed. So it is reduced to 5 grams. So it is a concentration of AT after it get reduced is 5. So if you will put all the values, so we know the rate constant value, that is K, that is 10 raised to the power minus 2 per second. We need to find out the time. Here they are asking how much time will it take for 20 gram of the reactant to reduce to 5 gram. So we will put all the values here. So I have put all the values here, and we have to find out the value of T. Log of 20 by 5, that is log of 4. The value of log of 4, you can see the log table, and it is 0.602. And when you will calculate the T, it will come out to be 138.6 seconds. So the answer here would be D, that is 138.6 seconds. So such type of questions can only be solved if you know the formula of such questions, and if you know how to put these values into this formula, and how to calculate. Otherwise, it will be difficult for you to solve such questions. So in many cases, what happens that they give you the values of these concentrations in kilogram, 1 in gram, 1 in kilogram. So you have to convert those values also, and then you need to solve that. Okay, so this is the last question which I would like to discuss here. The question is, the correct statement regarding electrophile is. So this question is from organic chemistry, and whenever we study organic chemistry,
there are two basic things which are important: electrophile and nucleophile. So you should know what is electrophile, what is nucleophile. And after checking out all these answers, we know that electrophile is a electropositive and they contain positive charge, and nucleophile contains negative charge. So electrophile can never have negative charge. So if you see these options, option A and B, where it is written electrophile is a negative charged species, so it is wrong. Again, here it is negatively charged species, it is wrong. Then C, it is written that electrophile is generally neutral species. And in the fourth option, you can see electrophile can be either neutral or positively charged. So the last option is correct because it could be either neutral or positive charge and can form a bond by accepting electrons from a nucleophile. So electrophile forms a bond with the nucleophile, like positive and negative charges which attract each other. In that way, electrophile reacts with nucleophile and they could be neutral or positive charge. So the answer here is the fourth one, that is electrophiles could be neutral or positively charged. So I have discussed variety of questions with you based on the physical chemistry, inorganic chemistry, and inorganic chemistry. And I have shown you different types, means they can be direct questions, they can be problem solving based, it will be a multiple choice question, so you can use elimination method. It could be based on electronic configuration or on the mechanism of the reaction. So there is a vast variety of questions you can expect as far as chemistry is concerned. The references and e-resources which you can use for preparation of CUET are NCERT books, of course. So if you are thorough with NCERT book, I think that is more than enough for you to to get success in CUET. Otherwise, you can also consult SWAM portal or NTA website. You can, there are many mock tests which are available on NTA website. You can try to solve them and you can try to get an idea how, which type of questions can come from chemistry background. Now, this is a very important point which I would like to discuss with you all, the key points for CUET preparation. And in this, I will suggest that you should follow a strategic timetable. So you should make a strategic timetable so that you need to study this much portion of your syllabus at in this much time, and so make a timetable. Revision of syllabus is mandatory. It is not like once you have studied it, you know everything. Revise it one or two times. It's better to cover the entire syllabus, because if you will, we don't know how much percentage of the syllabus will come from which topic. So it is better that you cover entire syllabus, and perseverance and hard work are the key to success. Always do hard work, enjoy learning, study from your heart, and I'm sure you will succeed. And the most important thing is time management. You have to manage your time so that you are giving time to yourself, to your brain, and how much you are inculcate from your study. That is more important. So these are some of the key points from my side. I wish you all the best for your CUET exam, and I know that if you will follow NCERT book, you will able to clear it. So I would like to end with a note that today a reader, tomorrow a leader. So अगर आप अभी पढ़ेंगे तभी आप आगे लीडर बन पाएंगे. अगर आप अभी नहीं पढ़ेंगे तो ये आपके लिए ही अच्छा नहीं होगा. तो इसलिए अभी से ही पढ़ना शुरू कर दीजिए, और पढ़िए तो एंजॉय करके पढ़िए, ऐसे नहीं बर्डन की तरह. जब बर्डन की तरह करेंगे तो फिर कुछ नहीं, you will not get success. So enjoy learning and have a happy studying. Thank you so much for your attention. Thank you, Dr. Poonam, for this wonderful session and for discussing the pattern of question paper as well as the questions you have taken from organic, inorganic, as well as physical chemistry.
हम आशा करते हैं कि आपके इस सेशन से जो अभ्यर्थी हमारे इस वर्ष CUET 2022 में केमिस्ट्री पेपर की तैयारी कर रहे हैं उनको काफ़ी मदद मिलेगी। धन्यवाद। Now we are moving to the next and the last session of the day, which is on performing arts, that is music. And in this session, we have Dr. Shruti Kalra with us. Again, I would like to invite Dr. Poonam to continue with this session. Over to you. Thank you so much, Dr. Shikha. So, being the coordinator of this session, also, I would like to now introduce Dr. Shruti Kalra. Dr. Shruti Kalra, welcome, ma'am. Thank you. So, Dr. Shruti Kalra, she is the third speaker and subject expert for performing arts, and she will be assisted by her colleague, Dr. Avinash Kumar. Dr. Kalra is Associate Professor in Department of Music at SPM College, University of Delhi. She is an alumnus of Delhi University. Her specialization is instrumental music, mainly sitar. Dr. Avinash Kumar, who is teaching Hindustani vocal music, he will also brief us about this topic, performing arts. Over to you, ma'am. Thank you. Thank you, Poonam, Dr. Poonam. Can you hear me properly? And yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you so much. Welcome, everybody, to this session, which is conducted by Delhi University, especially for the you students who are first time appearing for this DUET exam. And because we have heard physics and chemistry, two very scientific subjects, and we are actually performing art, a very different set of a mindset, and it's a very different kind of a subject which today I am going to address with you, all the students. So welcome you, and this is also a learning this is also a very learning process for us also, because DUET is absolutely new for all of us, whether we are teachers or these students. So I thanks Professor Pankaj Arora to organize and thought that we should have a orientation program for the students. So अगर students जिन्होंने join किया है और भरा है as a performing art इस यहाँ पर, तो उनके लिए ये I think this session will be very beneficial. इसमें DU जो है performing art के अंदर सिर्फ म्यूजिक को ही ऑप्ट कर देते हैं हम एक, because dance and other options are not been opted is not offered by the Delhi University. We are only taking up as a music as a subject. अब music में भी there are 4 bifurcations: music, Hindustani music, instrument, which is 2 parts, vocal music and instrumental music, then percussion, which is tabla and other instruments. Then we have a Carnatic music also, which is not offered by these different colleges. It's only taught in Faculty of Music and Fine Arts. So I don't know how many students has opted for this music subject here, but we will we basically handle the 4 subjects today, which is music vocal, Hindustani instrumental, percussion, and Carnatic vocal. So over to Dr. Avinash Kumar, which जो कि आपको सारी PPT और explain करेंगे how to attempt the questions and how to go about it. लेकिन मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ इसमें, you have to be very specific, और जब तक 100% confident ना हो, questions को बार बार पढ़ें, ध्यान से पढ़ें. अगर एक wrong tick करते हैं तो you will lose your 5 marks, which is very very important कि आप उसको बहुत carefully, thoughtfully questions के answer दीजिएगा. अपने marks को remove, बिल्कुल भी negative marking से बचना है आपको. If you are not sure, leave it, but don't tick on a wrong answer. So try to be thorough with your subject as
all the other colleagues and our persons are already guiding you that you have to be very, very thorough with your NCERT patterns. आपको जितना आप NCERT को के सिलेबस को पढ़ोगे, जितना ये आप अटेम्प्ट करोगे, आपके मॉक टेस्ट, आपका उतना प्रैक्टिस होगा, and I am really sure that you will all succeed in this exam. So over to you, Dr. Avinash. Thank you so much, ma'am. CUET performing arts, इसमें mainly we are discussing about music. और मैम ने जैसा बताया म्यूजिक के 4 सब सेक्शंस हैं। तो सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि संगीत से जो जुड़े हुए सवाल हैं वो कैसे और क्या आ सकते हैं। तो इसमें ये जानना ज़रूरी है कि क्या क्वेश्चंस किस एरिया से हमको पूछे जाएंगे या पूछे जा सकते हैं। तो स्वर, राग, ताल या जो कुछ बुक्स हैं, कुछ ग्रंथ जो हमारे हैं जो सिलेबस में, तो इन चारों पॉइंट्स पर फोकस करना मेनली बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस का क्राइटेरिया हमारा संगीत जो है मेनली जो आधारित है वो स्वर, लय, साहित्य, और हम जो चूँकि शास्त्रीय संगीत है तो शास्त्र उसमें अपने आप एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है उसका। शास्त्र तो हमको जानना और समझना ही पड़ेगा। तो मेनली क्वेश्चंस जो होंगे वो इस तरह के जो हमारे पार्ट्स हैं, क्राइटेरिया हैं, जो चीज़ें हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं या पढ़ते हैं उससे रिलेटेड होगा। तो मैं आपको एक जो हमारा प्रेजेंटेशन है वो मैं आपको दिखाता हूँ और उससे आई होप आप लोगों को काफ़ी कुछ और क्लैरिटी आएगी। क्या दिख रहा है आप लोगों को? मैम आपको अगर आप मुझे बता पाएँ जो हमारी पीपीटी है क्या वो विजिबल है? विजिबल है, हाँ जी विजिबल है। ओके, तो ये जो ऑनलाइन ओरिएंटेशन कम गाइडेंस प्रोग्राम फॉर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट दैट इज CUET 2022, तो इसमें जो हमारा है डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट ग्रुप परफॉर्मिंग आर्ट्स में भी म्यूज़िक हमारा फोकस है। म्यूज़िक ही हमारा एरिया है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, यही हम ऑफ़र करते हैं। तो प्रश्नों को समझने के लिए क्या हो सकते हैं, क्या आएंगे एग्जैक्टली बताना तो संभव नहीं, लेकिन क्या हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, वो हम डिस्कस कर सकते हैं थोड़ा बहुत। तो उसको जानने के लिए मुझे लगता है सबसे इम्पॉर्टेंट हमेशा ये होता है कि हम सिलेबस को जानें कि हमारा सिलेबस क्या है। सिलेबस को जान लेने के बाद हम ज़ीरो कर सकते हैं कि हाँ ये प्रश्न आ सकता है, ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो परफॉर्मिंग आर्ट्स के अंदर हमारे पास टोटल 3 सेक्शंस हैं। सेक्शन ए है डांस के कई सारे सब सेक्शंस हैं, जैसा आप देख सकते हैं कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, कथकली। हम उसको डील नहीं कर रहे क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये ऑफर नहीं करते। सेक्शन बी दैट इज़ ड्रामा थिएटर, दैट इज़ ऑल्सो वी आर नॉट डीलिंग विद बिकॉज वी डू नॉट ऑफर ड्रामा टू। सेक्शन सी जो है म्यूज़िक, वो हमारा फील्ड है जिस पर हम आज बात करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहली बात ये है कि मैम ने भी पहले बताया जैसा 50 क्वेश्चंस हैं उसमें से 40 आपको अटेम्प्ट करने हैं और नेगेटिव मार्किंग है तो यू कैन नॉट रश टू द आंसर। आपको कंफर्म होना चाहिए कि हाँ एटलीस्ट आपको एक श्योरिटी होनी चाहिए कि हाँ ये आंसर हो सकता है। थोड़ा सोचकर जवाब देना ही और टिक करना ही सही है। तो 50 में से 40 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। ये जो 3 सेक्शंस हैं इसमें से आप कोई भी एक सेक्शन चूज़ कर सकते हैं जब आप आंसर करेंगे। तो यहाँ पर हमारा सेक्शन सी जो है जिस पर हम बात कर रहे हैं आज, अब इसमें जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें 4 सब सेक्शन है, C1, C2, C3, C4। दैट इज़ हिंदुस्तानी म्यूज़िक, जिसके कि 2 और सब सेक्शन है जैसा कि मैम ने बताया। एक हिंदुस्तानी वोकल यानी कंठ संगीत एंड अदर वन इज़ इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक दैट इज़ वाद्य यंत्र संगीत।
सेकेंड वन इज कार्नाटिक म्यूजिक। उत्तर भारत में हम लोग जो संगीत गाते बजाते हैं उसको हम हिंदुस्तानी म्यूजिक कहते हैं, उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत कहते हैं। और हमारे देश के दक्षिणी हिस्से में सदर्न पार्ट में जो म्यूजिक चलता है उसको हम कार्नाटिक म्यूजिक कहते हैं। तो काफ़ी कुछ सिमिलैरिटी है हम दोनों संगीत में, काफ़ी कुछ अंतर भी है। रविंद्र संगीत देश के कुछ हिस्सों में, बंगाल में, उड़ीसा में, ऐसी जगहों पे जो कि रविंद्र संगीत कहलाता है वहाँ पर है, लेकिन हम इस पर भी बात नहीं करेंगे बिकॉज वी डू नॉट ऑफर रविंद्र संगीत इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। चौथा है परकशन, यानी कि तबला, मृदंग, पखावज, इस तरह की चीज़ें। तो हम आज C1, C2 और C4 दैट इज हिंदुस्तानी म्यूजिक, कार्नाटिक म्यूजिक एंड परकशन म्यूजिक, इस पर बात करेंगे। तो हम सेक्शन सी को जब चूज करते हैं तो उसके बाद हम इन चारों में से, और हम जैसा बात करें तो हिंदुस्तानी, कर्नाटिक और परकशन, इन तीनों में से कोई भी एक हम चूज कर सकते हैं कि वी वांट टू आंसर दिस, अपने आप आपका जो फील्ड होगा उसके हिसाब से। तो उससे रिलेटेड जो भी सिलेबस है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। उससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि प्रश्न कैसे आ सकते हैं। सबसे पहला जो यूनिट 1 है आप देखिए, उसमें ग्राम, मूर्छना, वर्ण, अलंकार, आलाप और तान, ये बहुत ही प्रारंभिक और बहुत ही एक शुरुआती चीज़ें हैं जो हम लोग पढ़ते हैं कि ग्राम क्या होता है या मूर्छना क्या होती है, वर्ण हम किसको, गान क्रियोच्यते वर्ण, अलंकार किसको बोलते हैं, या आलाप हम जब आलाप गाते भी हैं तो उसका प्रैक्टिकल के साथ साथ थ्योरेटिकल नॉलेज भी हमको मिलता रहता है। तान हम किसको बोलते हैं, ख्याल में हम तान को किस तरह से यूज़ करते हैं, या स्वरों को तानना या उसको लंबा करना तान कहलाता है, ये सब हम जानते हैं। उसके बाद जो कुछ और आप यूनिट 1 में ही देख सकते हैं, गमक, मींड, कन, खटका, मुर्की, कृंतन, जमजमा, घसीट और सूत, ये सारे पारिभाषिक शब्द हैं कि गमक कैसा है, तो आपने पढ़ा होगा कि स्वर से कंपो गमकः, स्वरों का कंपन। मींड कैसा है, एक स्वर से दूसरे स्वर तक बिना उसको ब्रेक किए बहते हुए जाना मींड है। कर्ण को हम कैसे यूज करते हैं, तो कर्ण किसको कहते हैं, या खटका। तो इस तरह की चीजें, इससे रिलेटेड प्रश्न आ सकते हैं, और ये सब पारिभाषिक शब्द हैं, तो इसको अगर आप पढ़ लें एक बार तो आप उससे रिलेटेड आंसर आराम से कर सकते हैं, कोई उसमें समस्या नहीं आती है। यूनिट 2 जो है दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ द रागास, एंशिएंट, मिडिएवल एंड मॉडर्न। अब राग जो है वो तो एक पुराने समय से चली आ रही चीज़ है। एंशिएंट टाइम से लेकर अभी तक हम राग को अलग अलग उसका एक क्रमिक विकास हुआ है, उसको हम जानते हैं। राग के और भी कई अर्थ हैं, लेकिन संगीत के अर्थ में मतंग के बृहद्देशी के समय से हम 7वीं 8वीं शताब्दी से राग संगीत के संदर्भ में क्या है हम ये जानते हैं, और उसका एंशिएंट यानी प्राचीन क्या था, मीडिएवल टाइम्स में राग को किस अर्थ में या किस तरह से लिया गया, राग के साथ राग रागनी सिस्टम क्या आया, या सूर्यांश चंद्रांश, इस तरह की चीज़ें क्या आई। और मॉडर्न यानी अभी हम राग को किस रूप में देखते हैं, या राग का हम क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं कि स्वर कितने लगे या किस अंग के राग हैं। तो इसका क्लासिफिकेशन जो रागों का है उसके ऊपर प्रश्न हो सकते हैं। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ टाइम थ्योरी ऑफ रागास, हम सब ये जानते हैं कि हमारा शास्त्रीय संगीत जो है इसमें विशेषकर उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत, जिसको हम हिंदुस्तानी म्यूजिक बोलते हैं, इसमें हम संगीत का समय निर्धारण होता है रागों का। कोई भी राग कब गाया जाता है उसके लिए हमने समय बांट रखा है, ये समय चला आ रहा है। कैसे 3-3 घंटों का हमने प्रहर बना रखा है, 4 से 7, 7 से 10, 10 से 1, 1 से 4, फिर शाम का 4 से 7, 7 से 10, 3-3 घंटे का हमने 8 प्रहर है ऐसा। तो टाइम थ्योरी रागों का अभी हम किस हिसाब से देखते हैं कि ये राग भैरव है, वो सुबह गाते हैं। अब सुबह गाने वाले रागों में कैसे स्वर लगते हैं या उनका वादी संवादी कैसा होता है, उस पर डिपेंड होता है टाइम थ्योरी। किसी भी राग में लगने वाले सुरों से हम जनरली ये डिसाइड करते हैं कि वो किस समय का राग है। तो उसके विषय में भी आपसे प्रश्न किए जा सकते हैं। और इसके बाद यूनिट 3 अगर हम देखें तो ये ग्रंथों के ऊपर है। जैसा कि मैंने बताया था कि शास्त्रीय संगीत है, तो शास्त्र एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे म्यूजिक का। हम जो भी गाते बजाते हैं उसका हमारे पास उसका शास्त्राधार है। हम शास्त्र को
समझ कर गाते बजाते हैं। हमारे पास उसका एक पूरा का पूरा एक पूरी की पूरी परंपरा है जिसका हम पालन करते हैं। और ज़रूर परंपरा के साथ साथ नयापन, विकास का जो एक तरीका है कि नई चीज़ें भी जुड़ती हैं, लेकिन परंपरा जो है तो उसका जो शास्त्र है वो कैसे है, कहाँ है, उस वक्त कैसा था, आज कैसा है। तो उसके लिए 2 पुस्तकें जो आपकी हैं हिंदुस्तानी के लिए, संगीत रत्नाकर और संगीत पारिजात, दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक्स हैं हमारी म्यूज़िक को जानने समझने के लिए। इसके अलावा लाइफ स्केच एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ इनायत खां, मुश्ताक अली खां, अलाउद्दीन खां, अब्दुल हलीम ज़ाफ़र, ये सारे इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हैं। इनमें से सितार बजाने वाले हैं, सरोद बजाने वाले हैं, सुरबहार बजाने वाले हैं। तो लाइफ स्केच है ये। अगला अगर हम देखेंगे तो डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रेस्क्राइब्ड तालाज अलॉन्ग विथ नोटेशन। तो ताल जो हमारे यहाँ ताल का एक सिस्टम है, हमारा ताल जो है वो जिसको हम कहते हैं बीट्स, जो वेस्टर्न म्यूज़िक में है या हमारे यहाँ जो ताल है उसमें एक कुछ अंतर हैं विशेष। तो उसको समझते हुए कि भाई ताली क्या है, खाली कौन सी मात्रा पे है, ताली कौन सी मात्रा पर है, कितने विभाग हैं, कितनी मात्राएं हैं, पहली मात्रा पर सम है, अगली ताली किस पे है। तो इसमें 4 हैं, झपताल, रूपक, तिलवाड़ा और धमार। ये चारों ताल बहुत ही फेमस हैं, बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं हमारी म्यूज़िक में। और स्टडी ऑफ वेरियस पार्ट्स एंड ट्यूनिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑप्टेड फॉर। आप अगर इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक आपने ऑप्ट किया है तो उसके अलग अलग पार्ट्स क्या हैं। जैसे अगर सितार है तो सितार में क्या क्या पार्ट होते हैं, तरब की तारें कौन सी होती हैं, उसको मिलाते कैसे हैं, पहली तार कौन से सुर पे मिलाते हैं। तो ये सब इसमें प्रश्न हो सकते हैं। उसके बाद क्रिटिकल स्टडी ऑफ प्रेस्क्राइब्ड रागाज अलॉन्ग विथ रिकॉग्नाइजिंग रागाज फ्रॉम फ्रेजेस ऑफ स्वराज एंड इलेबोरेटिंग देम। मतलब रागों को पहचानना, अगर हम एक खास तरीके से लिख दें कि भाई गामा कोमल रे, उस पर आंदोलन दिखाते हुए सा, तो ये कौन से राग को स्पष्ट करता है, तो आप खुद ब खुद समझेंगे भाई ये भैरव है, क्योंकि भैरव का खास फ्रेज है ये। तो ये 4 राग हैं आपके पास, भैरव, बागेश्वरी, शुद्ध सारंग और मालकोंस। ये जो था वो हिंदुस्तानी म्यूजिक से रिलेटेड था। अब अगर आप हिंदुस्तानी वोकल, उसके बाद जो सिलेबस अगर आप चेक करते हैं cuet.samarth.ac.in पर, तो उसके बाद हिंदुस्तानी वोकल लिखा हुआ आता है। सारी चीज़ें, सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं वो सेम है। लाइफ स्केच में आपको अंतर दिखेगा एक आध, जैसे उसमें इंस्ट्रूमेंटल का नाम था। अब इसमें देखिए, जब आप यूनिट 3 में आते हैं बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल सेम है। यूनिट 3 में जब हम आते हैं तो लाइफ स्केच एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ अब्दुल करीम खां, फयाज खां, बड़े गुलाम अली खां, कृष्णराव शंकर पंडित, ये सारे के सारे हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट हुए हैं। जो पीछे हम देख रहे थे वो सारे के सारे इंस्ट्रूमेंटलिस्ट थे, ये वोकलिस्ट हैं अलग अलग घरानों के। बाकी फिर आप देखिए सेम है, झपताल, रूपक, तिलवाड़ा, धमार। स्टडी ऑफ वेरियस पार्ट्स एंड ट्यूनिंग ऑफ तानपुरा, वहाँ पर इंस्ट्रूमेंटल दे रखा था कि आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट चूज करते हैं, और तानपुरा जो है वो वोकल के साथ, इंस्ट्रूमेंटल के साथ, सबके साथ ही यूज होने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रोन इंस्ट्रूमेंट है हमारे संगीत का। तो उससे रिलेटेड प्रश्न हुए। तानपुरे में जो 4 तार होते हैं किस स्वर पे मिलाते हैं हम, उसमें क्या तार जो होती है किसकी बनी होती है, या तुम्बा है या उसकी खूंटी है, तो उसको उसके पार्ट्स के बारे में जानना। अगली बात फिर वही है, क्रिटिकल स्टडी ऑफ प्रिस्क्राइब्ड रागाज अलॉन्ग विथ रिकॉग्नाइजिंग रागाज फ्रॉम फ्रेजेस ऑफ स्वराज एंड एलाबोरेटिंग देम। सेम चीज। राइटिंग नोटेशन, ये एक चीज नहीं है। राइटिंग नोटेशन, नोटेशन ऑफ द कॉम्पोजिशन ऑफ प्रिस्क्राइब्ड रागाज, नोटेशन लिखना यानी स्वर लिपिबद्ध करना। आप जो बंदिश सीखते हैं तो उसको हम स्वर लिपिबद्ध करना कहते हैं, कि उसको स्वर लिपि में कैसे लिखेंगे। अगर कोई लाइन है, पहली लाइन अगर हम गा रहे हैं प्रभु दाता, तो कौन से स्वर पर है, तो वो नोटेशन लिखना, उसको जानना आपको आना चाहिए। उसके बाद ये कर्नाटिक म्यूजिक है। कर्नाटिक म्यूजिक में भी इसी तरह की मोस्टली चीज़ें हैं। चूँकि ये मेरा फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज़ नहीं है, मैं हिंदुस्तानी से हूँ, हिंदुस्तानी वोकल से, लेकिन इसमें भी चीज़ें आपको ऑलमोस्ट वैसे ही दिखेंगी। जैसे अन्नामाचार्य स्वाति तिरुनल, चित्रजना महावैद्यनाथ अय्यर, सुब्रमण्यम अय्यर, रामनाथ श्रीनिवास अयंगर, ये सारे के सारे कर्नाटिक म्यूजिक के विद्वान हुए हैं। तो उनके विषय में ज्ञान होना, उनके विषय में पता होना, हिस्ट्री एंड थ्योरी ऑफ इंडियन म्यूजिक, एन आउटलाइन नॉलेज ऑफ फॉलोइंग लक्षण ग्रंथाज। जैसे हम हिंदुस्तानी म्यूजिक में देख रहे थे, हमारे पास संगीत रत्नाकर और संगीत पारिजात थे।
यहाँ पर संगीत सारामृत है, संगीत संप्रदाय प्रदर्शनी है, स्वर मेल कलानिधि है, राग विबोध है, बृहद देशी है। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें से बहुत सारे ग्रंथ हम नॉर्थ इंडियन म्यूजिक में भी पढ़ते हैं और इसको रेफर करते हैं। लाइव स्केच मैंने बताया कि कौन कौन से हैं। जैसे हमारे पास वोकल में बड़े गुलाम अली खां, अब्दुल करीम खां, और इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक में अब्दुल हलीम जाफ़र खां या मुश्ताक अली खां थे। वैसे ही इनके जो कर्नाटिक म्यूजिक में हमारे जो बड़े बड़े कलाकार हुए हैं उनका लाइव स्केच यहाँ पर पूछा गया है, तो इससे रिलेटेड प्रश्न हो सकते हैं। ब्रीफ स्टडी ऑफ म्यूजिकल फॉर्म, कृति, पदम, जावाली, तिल्लाना। जैसे हम उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत में ख्याल गाते हैं, ध्रुपद गाते हैं, ठुमरी गाते हैं, तराना गाते हैं, उसी तरह कृति, पदम, जाबाली, तिल्लाना ये कर्नाटिक म्यूजिक में अलग अलग फॉर्म्स हैं, अलग अलग गायन शैलियाँ हैं, तो उसके विषय में प्रश्न हो सकते हैं। डिटेल स्टडी ऑफ मनोधर्म संगीत। मनोधर्म संगीत कर्नाटिक म्यूजिक में क्या है, उससे रिलेटेड चीज़ें हो सकती है। जैसे हम गाना गाते हैं, हम उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत में ख्याल गाते हैं, तो उसमें आलाप पक्ष क्या है, बोल बाँट क्या है, तान क्या है, स्वर लगाने का तरीका क्या है, रागदारी क्या है, वैसे ही मनोधर्म संगीत कर्नाटिक म्यूजिक का है। फिर डेफिनेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉलोइंग, जनक जन्य सिस्टम ऑफ रागाज, यानी जैसे हम उत्तर भारत में ठाट राग पद्धति की ठाट को हम जनक मानते हैं, राग को हम जन्य मानते हैं, वैसे ही कर्नाटिक सिस्टम जो मेल का है या उनका जनक और जन्य सिस्टम क्या है उसके विषय में भाषांग, उपांग और वर्ज ये क्या है उससे रिलेटेड प्रश्न। वक्र राग, गमक, आरूढ़ी, इडुप्पू, इस तरह की चीज़ें या प्रयोग क्या होते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ द रागास प्रेस्क्राइब्ड, जैसे उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत में हम हिंदुस्तानी में देख रहे थे 4 रागास हैं, वैसे ही कैंडिडेट शुड बी एबल टू राइट नोटेशन ऑफ द कृति और कीर्तना। जैसे नोटेशन की बात वोकल म्यूजिक में हुई थी, वही बात है द कैंडिडेट शुड बी एबल टू डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑप्टेड। तो ये एक ही जैसी चीज़ इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक के लिए था, वोकल के लिए था, कर्नाटिक के लिए भी था। क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट का आपको पता होना चाहिए। जैसे हम उत्तर भारत में तत्, अवनद्ध, घन और सुशिर की बात करते हैं, वैसे कर्नाटिक म्यूजिक में क्या सिस्टम है। ऐसी जैसे पीछे हमने देखा था कि इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक और वोकल म्यूजिक में सब कुछ सेम था, उसी तरह कर्नाटिक इंस्ट्रूमेंटल और वोकल में भी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें चेंज हैं। आपको थोड़े बहुत अंतर मिलेंगे लाइव स्केच में और उसके नोटेशन में। लक्षणाज ऑफ रागास प्रेस्क्राइब, ये इसमें एक नई चीज़ आपको देखने को मिलेगी। रविंद्र संगीत, इसको हम डील नहीं कर रहे क्योंकि हम इसको दिल्ली यूनिवर्सिटी में वी डोंट ऑफर रविंद्र संगीत। परकशन म्यूजिक, तो इसमें तबले से रिलेटेड जैसे उठान क्या है, पेशकार क्या है, चक्रधार क्या है या बाँट क्या है। हम उठान किसको बोलते हैं, बनारस घराने में उठान किसको बोलते हैं, तबला जब हम सोलो बजाते हैं तो पेशकार क्या होता है या चक्रधार तिहाइयाँ क्या होती है, उससे रिलेटेड प्रश्न। कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द फॉलोइंग, चौताल, एक ताल, झपताल, सूलताल, तीन ताल, तिलवाड़ा। ये कंपैरेटिव स्टडी इसलिए दी गई है कि ये जो तालें हैं, जोड़े जो बने हुए हैं, पेयर्स जो हैं, वो समान मात्राओं की ताल है। चौताल, एक ताल जो 12 मात्रा की ताल है, विभाग भी सेम है, ताली खाली भी सेम है, तो दोनों का अंतर क्या है, यानी सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस वी शुड नो अबाउट दीज ग्रुप ऑफ तालास। अगला है यूनिट 2, लयकारी यूनिट्स वैरायटी। अलग अलग किस्म की लयकारियाँ क्या होती हैं, जिसको हम आड़, बेआड़, कुआड़ बोलते हैं, अलग अलग किस्म की, उसके बारे में जानना। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ घरानाज ऑफ तबला और पखावज। तबला और पखावज के, जैसे तबले के दिल्ली घराना है, अजराड़ा घराना है, लखनऊ, फर्रुखाबाद, बनारस, पंजाब, ऐसे अलग अलग घराने तो हमको पता होना चाहिए कि भाई जैसे दिल्ली घराना सिद्धार्थ खान साहब से ऐसा मानते हैं, तो ऐसे अलग अलग घरानों की उत्पत्ति और विकास का हमें नॉलेज होना चाहिए। ऐसे हिस्ट्री तबला पखावज का, कहाँ से तबला आया, जो पुष्कर वाद्य से आया, या कुछ लोग कहते हैं पखावज को काट कर तबले को सोचा गया, जो भी है इसके अलग अलग जो थ्योरीज हैं वो पता होना चाहिए। brief history of medieval and modern period of Hindustani music, especially in the field of percussion instrument. जैसे पीछे हम उत्तर भारतीय संगीत का हमने देखा था कि मेडिएवल मॉडर्न, एंशिएंट मेडिएवल मॉडर्न था, वैसे ही तबले के संदर्भ में, परकशन म्यूजिक के संदर्भ में क्या है, इसका नॉलेज। वैसे ही मृदंगम का भी, उसकी जैसे इसमें उठान, बाँट, उस तरह की बातें थी, तो मृदंगम के संदर्भ में उस तरह की चीज़ें हैं। कुछ ग्रंथ हैं मृदंगम में, चतुर्दंडी प्रकाशिका, संगीत रत्नाकर जो कि हिंदुस्तानी वोकल में भी था,
राग विबोध जो कि कर्नाटिक में भी आपने देखा, स्वरमेल कलानिधि आपने कर्नाटिक में देखा, क्योंकि मृदंगम जो होता है वो कर्नाटिक म्यूजिक के साथ यूज होता है मोस्टली। तो ये इस तरह का आपको आपका सिलेबस है। आप इसको और अच्छे से ये जो लिंक है इस पे जाके आप सिलेबस देख सकते हैं, cuet.samarth.ac.in। वहाँ जाकर अगर आप परफॉर्मिंग आर्ट पर क्लिक करेंगे तो यू कैन डाउनलोड द होल सिलेबस। ऐसे ही एनटीए की वेबसाइट पे भी जाएंगे तो आपको मॉक टेस्ट भी मिलेगा और सारा का सारा ही ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर अवेलेबल हैं। अब कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, उस क्वेश्चंस के द्वारा हम ये समझ सकते हैं कि भाई इतने सारे टॉपिक्स हैं तो इससे किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं। प्रश्न बनने के बहुत सारा स्कोप है, इसमें कई क्वेश्चंस तैयार किए जा सकते हैं। तो एक बस आप समझिए कि किस तरह से हो सकता है एक ऐसा अंदाज़ा। तो सबसे पहला जैसे प्रश्न है, हाउ मेनी ग्राम्स आर देयर इन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। हमारे शास्त्रीय संगीत में कितने ग्राम माने गए हैं। अब षडज, मध्यम और गांधार हम सब जानते हैं जो संगीत से के विद्यार्थी हैं कि 3 ये ग्राम हमारे यहाँ माने गए, और इसके ऑप्शन से 3, 4, 5, 6 है। 3 ग्राम माने गए हैं, उसमें से गांधार ग्राम के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो ग्राम मोस्टली 3 ही हर जगह यही सर्वमान्य है कि 3 ही ग्राम थे, उसमें से एक का ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ तो कह दिया गया वो लोप हो गया, उसका वो समय काल के हिसाब से चला गया। अब इसमें ये प्रश्न हो सकता है कि भाई गांधार षडज ग्राम है तो उसकी श्रुतियों का अंतर कैसा है, 4-3-2, 4-4-3-2, या मध्यम ग्राम है तो उसका 4-3-2, 4-3-4-2, तो ये हमें पता होना चाहिए। अब अगला प्रश्न जो है कि हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर इन संगीत रत्नाकर। संगीत रत्नाकर जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है जिसको हम रेफ़र करते हैं आज के शास्त्रीय संगीत में। पुरानी चीज़ों को समझने के लिए भी उस वक्त राग कैसा था, तो संगीत रत्नाकर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है जिसके बारे में हमको पता होना चाहिए। तो संगीत रत्नाकर को एक हम इस नाम से भी जानते हैं, इसको हम कहते हैं सप्ताध्यायी, यानी 7 अध्यायों वाला, है ना। संगीत रत्नाकर में जो 7 अध्याय हैं अलग अलग, तो इस 7 अध्याय होते हैं, तो इसलिए एक प्रश्न हो सकता है क्योंकि ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट है। आप देखेंगे तो अक्सर ये प्रश्न हर जगह रहता है कि संगीत रत्नाकर में कितने अध्याय हैं, कितने चैप्टर्स हैं। सप्ताध्यायी नाम ही है तो 7 चैप्टर्स के होते हैं। ऐसे ही आपके सिलेबस में एक और है संगीत पारिजात, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है, ये भी हमारे शास्त्रीय संगीत का जिसको हम रेफर करते हैं। तो संगीत पारिजात किसने लिखा, तो ये हमको पता होना चाहिए। हमारे पास संगीत रत्नाकर शारंग देव ने लिखा था और संगीत पारिजात जो है वो अहोबल ने लिखा था। विच ऑफ द फॉलोइंग रागाज हैव कोमल रे एंड कोमल धा इन इट। अब राग जो होते हैं वो उसमें अलग अलग स्वर प्रयुक्त होते हैं। हमारे शास्त्रीय संगीत में 7 शुद्ध और 5 विकृत स्वर माने गए हैं। 4 विकृत कोमल विकृत हैं, रे, ग, धा और नी, जो कि शुद्ध के साथ कोमल भी होते हैं, और मा वो शुद्ध के साथ तीव्र भी होता है। तो जब भी हम कोई राग सीखते हैं तो राग जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। राग से ही स्वर स्वर जो होते हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। स्वर से ही रागों का निर्माण होता है। स्वर जो है वो जैसे मकान के लिए, घर के लिए ईंट है, वैसे ईंट है वो। तो कोई भी राग हम सीखते हैं तो सबसे पहले हमको ये बताया जाता है कि इसमें क्या क्या स्वर लगते हैं। भैरव में क्या स्वर है, बागेश्वरी में क्या स्वर हैं, मालकोंश में क्या स्वर हैं, या शुद्ध सारंग में क्या स्वर हैं, जो आपके सिलेबस के राग हैं, तो वो हमको पता होना चाहिए। तो इन भैरव, बागेश्वरी, मालकोंस और शुद्ध सारंग, ये 4 हैं। तो इनमें से हमें पता है कि भैरव में जो है रे और धा स्वर कोमल प्रयुक्त होते हैं। इसमें हमें ये भी पता होना चाहिए कि रे की जगह ऋषभ लिखा हुआ हो सकता है, धा की जगह धैवत लिखा हो सकता है, क्योंकि सा का पूरा नाम षडज, रे का ऋषभ, गा का गांधार, मा का मध्यम, पा का पंचम, धा का धैवत और नी का निषाद है। तो कोमल रे एंड कोमल धा की जगह कोमल ऋषभ एंड कोमल धैवत लिखा हुआ हो सकता है। तो भैरव में रे और धा स्वर कोमल हैं, बागेश्वरी में रे और धा स्वर शुद्ध लगते हैं, मालकोंस में रे स्वर ही नहीं लगता, वर्जित है, और शुद्ध सारंग में भी रे और धा स्वर शुद्ध लगते हैं। तो इस हिसाब से इसका सही आंसर जो है वो भैरव होगा।
अगला प्रश्न ये है कि ताल रूपक हैव 10 मात्रा, 14 मात्रा, 7 मात्रा, 16 मात्रा। रूपक ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? हमारे शास्त्रीय संगीत की जो ताल व्यवस्था है उसमें हर एक ताल की मात्राएं निश्चित की गई हैं। इस ताल में इतनी मात्रा होगी, इस ताल में इतनी मात्राओं में इस मात्रा पर सम होगा, इस पर खाली होगी, इस पर ताली होगी, ये पता है हमें। जैसे 3 ताल में 16 मात्राएं होती हैं। जब भी हम कोई राग सीखते हैं और उसमें एक कॉम्पोजिशन सीखते हैं, तो कॉम्पोजिशन सीखते ही सबसे पहले हमको ये बताया जाता है या हम ये पढ़ते हैं या सीखते हैं कि ये कॉम्पोजिशन इस ताल में निबद्ध है। दिस कॉम्पोजिशन इज इन 3 ताल, दिस कॉम्पोजिशन इज इन झप ताल और दिस कॉम्पोजिशन इज इन धमार और वॉटेवर। ताल जैसे ही बंदिश यानी जैसे ही कॉम्पोजिशन का पक्ष आता है, ताल शुरू हो जाती है। निबद्ध जैसे ही संगीत हुआ तो उसके साथ ताल आपरूपी जुड़ जाता है। तो ताल रूपक जो हमारे सिलेबस के ताल हैं 4, अगर हम उसको पढ़ लें तो हमें आसानी से पता है कि रूपक में 7 मात्राएं होती हैं। अगर हमको उस वक्त ना भी याद आ रहा हो और बोल हमें याद है, जैसे रूपक के बोल हैं ती ती ना धी ना धी ना ती ती ना 1 2 3 4 5 6 7 1, तो ये आपको अगर आप वहाँ बोल भी दोहरा लें तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी, अच्छा इसमें 7 मात्राएं हैं। ऐसे ही अगला प्रश्न है कि द जाति ऑफ राग मालकोंस इज। अब राग की जाति हम संगीत के विद्यार्थी जानते हैं कि किसी भी राग की जाति निर्धारित की जाती है उस राग में लगने वाले स्वरों की संख्या के आधार पे। द नंबर ऑफ नोट्स दैट वी आर यूजिंग इन एनी रागा डिस्क्राइब्स द जाति ऑफ दैट रागा। तो 3 प्रकार की साधारण तौर पर अगर हम समझे तो स्वर के आधार पर हो गया। जिस राग में कोई एक स्वर वर्जित है उसको हम कहते हैं षाडव। षाडव संस्कृत का शब्द है, षड का मतलब 6, तो षाडव का मतलब हो गया 6। और जिस राग में 5 ही स्वर लगते हैं उसको हम कहते हैं औड़व। औड़व का मतलब 5। 5 स्वर से कम स्वरों का राग नहीं हो सकता, कम से कम 5 और अधिक से अधिक 7 स्वर से ही राग बनते हैं। तो मालकोंस के बारे में कि जैसा कि हम जानते हैं कि मालकोंस में रे और पा ये दोनों स्वर वर्जित हैं। तो मालकोंस की जाति इस हिसाब से, क्योंकि 5 स्वर लगे सा गा म ध नी, रे और पा वर्जित है। वी डू नॉट यूज रे एंड पा इन राग मालकोंस। सो अकॉर्डिंग टू दिस रागा बिकम्स एन औड़व औड़व जाति रागा। औड़व औड़व मतलब राग में आरोह और अवरोह दोनों होते हैं। द फर्स्ट वर्ड shows the आरोहन पार्ट, the second word shows the अवरोहन पार्ट। औड़व औड़व मीन्स आरोह में भी 5, अवरोह में भी 5। औड़व संपूर्ण अगर कहीं लिखा है इसका मतलब कि औड़व में 5 है और जाते समय यानी आरोह में 5 है और अवरोह संपूर्ण है तो 7 है। तो राग मालकोंस की जाति जो है वो द करेक्ट आंसर विल बी ए, दैट इज औड़व औड़व। अब अगला प्रश्न है, ये भी ग्रंथ से रिलेटेड है। हु रोट द फेमस बुक बृहददेशी। बृहददेशी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है क्योंकि राग शब्द का सबसे पहला जो वर्णन है हमें बृहददेशी में मिलता है। तो ये कुछ बुक्स हैं जिनका हमको बिल्कुल पता होना चाहिए। तो बृहददेशी जो है वो मतंग मुनि ने इस किताब को, इस ग्रंथ को लिखा था। 7वां प्रश्न ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ताला हैव 16 मात्रास। जैसे रूपक ताल में 7 मात्रा है, वैसे ही हमको ये पता होना चाहिए कि इस ताल में, किसी ताल में कितनी मात्राएं। चौताल में 12 मात्राएं होती हैं, एक ताल में भी 12 मात्राएं होती हैं, झप ताल में 10 मात्रा होती है और 3 ताल में 16 मात्राएं होती है। धा धिन धिन धा धिन धा तिन तिन ता धिन धिन धा। तो ये टोटल 16 हो गई। तो अगर आप उस टाइम आंसर करते समय अगर आपको एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा तो आप उसके बोल जो हैं तबले के वो आप दोहरा सकते हैं मन में, उससे आपको पता चल जाएगा कि इसमें कितनी मात्रा है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगिंग स्टाइल। हमारे पास अलग अलग किस्म के सिंगिंग स्टाइल्स हैं यानी गायन शैलियाँ। जो शास्त्रीय संगीत अभी हम गाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ख्याल। ख्याल संगीत मेनली सबसे पॉपुलर वो है। इसी तरह जो इसमें सादरा, ग्राम, मूर्छना और नन ऑफ द एबव, तो इन सब में ग्राम जो है वो स्वरों के समूह को कहते हैं, वो सब गाने की विधानी है।
मूर्छना जो है आप समझ लीजिए एक तरह से स्केल चेंज की बात है। मूर्छना एक सब पारिभाषिक शब्द है। सादरा जो है वो एक गाने की विधा है। सादरा ही इन चारों ऑप्शंस में से सादरा एक ऐसी चीज है जिसको हम गाते हैं। जैसे अलग अलग कॉम्पोजिशन में कहीं कहीं आप लिखा देख सकते हैं, कहीं लिखा देखेंगे कि ये राग भैरव का ध्रुपद है, या आप कहीं देखेंगे ये राग बागेश्वरी का ख्याल है, कहीं देखेंगे ये राग भैरवी में ठुमरी है। ऐसे आपको कई कॉम्पोजिशन मिलेंगी कि ये इस राग में सादरा है। सादरा इज अ सिंगिंग स्टाइल। द करेक्ट आंसर विल बी ए, सादरा। हमारे जो हमने सिलेबस पढ़ा था उसमें कई सारे लोगों के नाम थे जिनके लाइफ स्केच के बारे में हमको पढ़ना है। लाइफ स्केच हम पढ़ेंगे तो हमारे म्यूज़िक में घराना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे म्यूज़िक का। चाहे वो गाना हो, चाहे वो सितार बजाना हो, चाहे वो तबला बजाना हो, यानी गायन, वादन, नृत्य कुछ भी हो, इन सब में ही घराने का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है, एक इम्पोर्टेंट पार्ट है घराना। तो फयाज़ खां की जब आप लाइफ स्केच को पढ़ते हैं तो उसमें आपको पहले दूसरी या तीसरी लाइन में ही घराना इतना इम्पोर्टेंट है कि आपको दूसरी तीसरी लाइन में ही ये पता चल जाता है कि उस्ताद फयाज़ खां जो हैं वो आगरा घराने के हैं। जैसे हमारे सिलेबस में एक और है अब्दुल करीम खां, वो किराना घराना के हैं। ऐसे आपके अलग अलग जब आप देखेंगे, जैसे कृष्णराव शंकर पंडित हैं तो वो ग्वालियर घराना के हैं। ऐसे आपको ये जैसे ही आप सिलेबस देख कर और आप जैसे ही इसकी तैयारी शुरू करते हैं, लाइफ स्केच को पढ़ते हैं, तो इन प्रश्नों के जवाब खुद ब खुद आपके सामने पहले से ही आपके दिमाग में रहते हैं। अगला प्रश्न ये है कि द तिल्लाना ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक इज इक्विवेलेंट टू हिंदुस्तानी म्यूजिक्स। मतलब जो तिल्लाना शास्त्रीय कर्नाटिक शास्त्रीय संगीत में जिसको वो तिल्लाना कहते हैं, उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत में उसका समकक्ष क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदुस्तानी नॉर्थ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक हो या कर्नाटिक म्यूजिक दैट इज साउथ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, उनमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। नामों का अंतर है थोड़ा बहुत, और भी कई अंतर हैं, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें मिलती जुलती भी हैं। तो तिल्लाना जो है, जिसको वो तिल्लाना कहते हैं, हम उत्तर भारत में वैसी ही एक गायन शैली गाते हैं जिसको हम तराना कहते हैं। दोनों में ही मीनिंगलेस सिलेबल्स को गाने का, यानी अर्थहीन शब्दों का प्रयोग होता है। तो तिल्लाना जो है वो तराना के समकक्ष है। तिल्लाना वो कहते हैं, हम वैसी ही चीज़ को, ऑलमोस्ट सब कुछ बिल्कुल सेम है लेकिन वैसी ही किसी चीज़ को हम तराना कहते हैं। तो अगर हम सिलेबस की तरफ गौर से देखेंगे और सिलेबस को पढ़ना शुरू करेंगे तो बहुत सारी चीज़ों के आंसर खुद ब खुद आपके सामने रहेंगे। जब आप प्रश्न देखेंगे तो आपने जो पढ़ा होगा तो आपको खुद ब खुद ध्यान आ जाएगा। मॉक टेस्ट एनटीए की वेबसाइट पर है, आप उसकी अगर प्रैक्टिस करें तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि रागों से संबंधित, राग में लगने वाले स्वरों से संबंधित, ताल से संबंधित, ताल में कितनी मात्राएं होती हैं उससे संबंधित, कौन सी मात्रा पर ताली है, सम है या खाली है, उससे संबंधित, जो कलाकार हैं वो कलाकार किस घराने के हैं, वो कलाकार क्या गाते हैं, इससे संबंधित, और हमारे जो कुछ इम्पोर्टेंट ग्रंथ हैं उससे संबंधित प्रश्न बहुत ही ऐसी चीज़ें हैं कि जिसको हम सिलेबस को जब गो थ्रू करेंगे और उसको हमने अगर टारगेट कर रखा कि आज यहाँ से यहाँ तक की हमको तैयारी करें, जब कर लेंगे सारा तो खुद ब खुद आपके पास आंसर होगा इन सारी चीज़ों का। तो मेनली मुझे ऐसा लगता है कि प्रश्न तो कई आ सकते हैं, कई कुछ हो सकता है, लेकिन इससे कुछ क्लैरिटी हुई होगी कि इस तरह से प्रश्न बन सकते हैं। और अगर सिलेबस को पढ़ें और एनसीईआरटी की जो रिकमेंडेड बुक्स हैं हम उसको बार बार पढ़ें, उसको देखें, तो सारे के सारे पूरा का पूरा सिलेबस और उससे बनने वाले जितनी भी चीज़ें, सारा कुछ उसमें हमको बिल्कुल मिल जाएगा, उसमें कोई भी समस्या नहीं आएगी। थैंक यू सो मच श्रुति मैम एंड अविनाश जी, जिन्होंने हमारे साथ हिंदुस्तानी मेलोडिक म्यूजिक, कर्नाटिक म्यूजिक और परकशन म्यूजिक के बारे में हमें बताया। और मुझे लगता है ये हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा ये सारी नॉलेज। और जैसे कि सब हम लोग कह रहे हैं कि एनसीईआरटी बुक को रेफर कीजिए और एनसीईआरटी बुक ही
एक ऐसा सोर्स है जिसको अगर आप थॉरली रिवाइज करेंगे, पूरा सिलेबस कंप्लीट कर कर जाएंगे, तो आपको बहुत मुश्किल नहीं होगी इस परीक्षा को पूरा करने के लिए। Dr. Poonam, I just want to add one thing, or that students do not have to afraid or don't become a panicky for Right. syllabus, because they are very simple. Although they are seems to be a very large and elaborated ones, but they are actually not so difficult. So they just need to understand Right. जो बेसिक मोटिव है इस समय इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम को करने का, दैट इज टू मेक देम अवेयर दैट दे शुड नॉट बी afraid or be don't get panicky or don't think that is a very difficult questions or new thing is introduced to us. So be prepared when we are always there for them. This full team is working very hard to make it very simple and very approachable things to them. So if they have any kind of a question regarding all these things, they can openly ask in this forum itself. जी बिल्कुल। I think there is no question for now, but yes, students who are listening to us through YouTube channel, they can send us the feedback and they can send us the question and ask us. We will revert. We will surely revert back to them. I think with this we can end this session. Swati. Of course, Dr. Poonam, we are very thankful to the resource persons who spared out time and invested their pool of knowledge. It's a very important input regarding the orientation come guidance for the students who are aspiring to get admission in University of Delhi. We all are adding a bit of it to make them get out of the fear and acquaint them with the basic structure of CUT. And this session went on so informative, so engaging with lots of input from both one side, from a hardcore science perspective, and definitely the other with those lovely music and art perspective. So this shows the diversity of University of Delhi, that how we inculcate the different dimensions of holistic development. So it's not only about conceptual understanding, but every subject is so very important, and the student should feel free that whatever they want to wish to take as a subject to pursue the career, they should go for it. And music is not less than that. I was very interestingly involved in the entire period and was really enjoying the presentation of Dr. Avinash, who has been guided by Dr. Shruti to give the inputs regarding this subject. I was enjoying literally, sir, with all those explanation of ragas and things. So it's such a soothing way to get into the intricacies of the syllabus and plus to understand the delicacy of a subject. So with this very important note, uh, I I think, Dr. Poonam, we are very much at time and very well managed session by you as a coordinator. You have Thank you always so been much. efficient in doing everything regarding the program organization and stuff. Thank So over you. to you. Thank you. So with this, I thank all the resource person and I request Mr. Ravi to please end the session. Thank you. Thank you, Poonam, for organizing.